Thakurji. Honorable Governor of Punjab and Administrator of Union Territory of Chandigarh, Shri Banwari Lal Purohitji. The People's Chief Minister, Honorable Chief Minister of Manipur, Shri Nongthombam Biren Singh. Honorable Minister of State for Youth Affairs and Sports and Home Affairs, Shri Nishit Pramanikji. Secretary, Sports Government of India, Shrimati Sujata Chaturvedi ji. Secretary, Youth Affairs Government of India, Shrimati Meeta Rajiv Lochan ji. Thank you so much, Honorable Minister, Youth Affairs and Sports, Manipur. The Chief Secretary, Government of Manipur, Dr. Rajesh Kumar, to be felicitated with the traditional Manipuri Lengyan. Ladies and gentlemen, welcome to Manipur, the sports powerhouse of India. It is the land of legendary Olympians, the cradle of polo. Manipur gave polo the king of games and the game of kings to the world. May I now request Honorable Chief Minister of Manipur, Shri Nongthombam Biren Singh ji, to present a Manipuri painting to the Honorable Youth Affairs and Sports and Information and Broadcasting Minister, Shri Anurag Singh Thakur ji. This is the globally acclaimed Ras Leela of Manipur, one of the classical dances of India. This painting will now be presented to the Honorable Chief Minister of Manipur, who will in turn hand it over to Shri Anurag Singh Thakur ji. Honorable Governor of Punjab and Administrator of the Union Territory of Chandigarh, Shri Banwari Lal Purohit ji, will be presented with Khamba and Thoibi, the legendary hero and heroine of Manipur, the folk hero and heroine of Manipur, a replica to be presented. Honorable Minister of State for Youth Affairs and Sports and Home Affairs, Government of India, Shri Nishit Pramanikji, will be presented with a world-renowned spectacular drum dance of Manipur entitled Pung Cholom. Secretary, Sports Government of India, Shrimati Sujata Chaturvedi ji, will be presented with the Meitei Piruk, a painting of the ladies of Manipur carrying piruk, that is, the traditional basket on their heads for a ceremonial function. The Honorable Chief Minister presenting to the Secretary, Sports Government of India. Secretary, Youth Affairs Government of India, Shrimati Meeta Rajiv Lochanji, to be presented with a painting of Khamba and Thoibi, the legendary folk hero and heroine of Manipur. Thank you so much to the Honorable Chief Minister of Manipur, Shri Nongthombam Biren Singh ji, for honoring our distinguished dignitaries gracing the dais. Thank you, sir. Now we would like to invite Srimati Sujata Chaturvedi, Secretary Sports, Government of India, for the welcome address. Namaskar, a very good morning. Honorable Chief Minister of Manipur, Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Government of India, Honorable Governor of Punjab and Administrator of Chandigarh, Honorable Minister of State for Youth Affairs and Sports, Honorable Ministers in charge of Sports and Youth Development of States, and my colleagues from the Youth Affairs and Sports domain, and the states and all the dignitaries present here. It is my great pleasure and privilege to welcome you all to the Chintan Shivir of the State Ministers of Youth Affairs and Sports. I thank you all for taking your time and effort to be present here to deliberate and formulate an action plan for the development of two key domains that hold great importance and potential to contribute to India's growth story: the development of youth and the nation's eminence in sports.
While the nation aspires to be a global leader in various domains of excellence, with the eye on the larger picture, the approach towards succeeding in sports and youth engagement requires micro steps which we all are here to deliberate upon and take. The recent performance of Indian athletes on the international stage proves that it is time for us to excel and show that we can be world leaders in sport. It is the right time to focus on building a sporting culture, starting from the lowest unit, which is what we tend to do on a day-to-day basis. Any country that is successful in sports, either a single sport or multiple sports, has ensured that the culture cascades down to the masses. By ensuring this, the countries have been able to increase the talent pool at the lowest levels of the pyramid, giving them a non-stop supply of potential athletes at each level of the sports development. My humble submission to all of us here is that we have to keep this goal in mind and be true to our creed and come good on our promise to help the people of this country to excel in whatever they wish, including in sports. By thanking you all here to have come all the way, I would like to also say that the two-day conference is packed with lots of interesting sessions, important ideas that we are sharing from the states. We have eminent speakers lined up, and I would also like to place on record my heartfelt thanks to the Honorable CM and all his people in Manipur, Imphal, who have been excellent hosts and who have made our stay very, very comfortable. I look forward to your participation in this wonderful gathering. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, I am extremely overwhelmed to inform this August gathering that Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, is going to address this gathering through the video address. It is a great honor for all of us. I request the technical team to kindly connect us to the video address of the Honorable Prime Minister. नमस्कार। कार्यक्रम में भाग ले रहे कैबिनेट में मेरे सहयोगी अनुराग ठाकुर, सभी राज्यों के यूथ अफेयर्स एवं स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, मुझे खुशी है कि इस साल देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स की ये कॉन्फ्रेंस, ये चिंतन शिविर मणिपुर की धरती पर हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट से निकलकर कितने ही खिलाड़ियों ने तिरंगे की शान बढ़ाई है, देश के लिए मेडल्स जीते हैं। देश की खेल परंपरा को आगे बढ़ाने में पूर्वोत्तर और मणिपुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहां के सगोल कांगजई, थांगता, यूबी लाकपी, मुकना और हियांग तानवा जैसे स्वदेशी खेल अपने आप में बहुत आकर्षक है। जैसे जब हम मणिपुर के ऊल लावबी को देखते हैं तो हमें उसमें कबड्डी की झलक दिखती है। यहाँ का हियांग तानबा केरला की बोट रेस की याद दिलाता है और पोलो से भी मणिपुर का ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। यानी जिस तरह नॉर्थ ईस्ट देश की सांस्कृतिक विविधता में नए रंग भरता है, उसी तरह देश की खेल विविधता को भी नए आयाम देता है। मुझे उम्मीद है देश भर से आए स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स मणिपुर से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे और मुझे विश्वास है मणिपुर के लोगों का स्नेह, उनका आतिथ्य भाव आपके प्रवास को और आनंदमयी बना देगा। मैं चिंतन शिविर में भाग ले रहे
सभी खेल मंत्रियों का, अन्य महानुभावों का स्वागत करता हूं, इस प्रयास का अभिनंदन करता हूं। साथियों, कोई भी चिंतन शिविर चिंतन से शुरू होता है, मनन के साथ आगे बढ़ता है और क्रियान्वयन पर पूरा होता है। यानी फर्स्ट कम्स रिफ्लेक्शन, देन रियलाइजेशन एंड देन इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्शन। इसलिए इस चिंतन शिविर में आपको भविष्य के लक्ष्यों पर विमर्श तो करना ही है, साथ ही पहले की कॉन्फ्रेंस की भी समीक्षा करनी है। आप सभी को याद होगा, इसके पहले जब हम 2022 में केवड़िया में मिले थे, तब कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। हमने भविष्य को ध्यान में रखकर रोड मैप बनाने और खेलों की बेहतरी के लिए इकोसिस्टम तैयार करने पर सहमति जताई थी। हमने स्पोर्ट्स सेक्टर में केंद्र सरकार और राज्यों के बीच पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात कही थी। अब इम्फाल में आप सभी ये जरूर देखें कि उस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि ये समीक्षा पॉलिसी और प्रोग्राम्स के लेवल पर ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये समीक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी होनी चाहिए और बीते एक वर्ष की खेल उपलब्धियों पर भी होनी चाहिए। साथियों, ये बात सही है कि पिछले एक वर्ष में भारतीय एथलीट्स और खिलाड़ियों ने कई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। हमें इन उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए साथ ही ये भी सोचना है कि हम अपने खिलाड़ियों की ओर ज्यादा से ज्यादा मदद कैसे कर सकते हैं। आने वाले समय में स्क्वॉश वर्ल्ड कप, हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, ऐसे आयोजनों में आपके मंत्रालय और आपके विभागों की तैयारियों की परीक्षा होनी है। ठीक है, खिलाड़ी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स को लेकर हमारे मंत्रालयों को भी अलग अप्रोच से काम करना होगा। जैसे फुटबॉल और हॉकी जैसे खेलों में मैन टू मैन मार्किंग होती है, वैसे ही आप सभी को मैच टू मैच मार्किंग करनी होगी। हर टूर्नामेंट के लिए अलग रणनीति बनानी होती है। आपको हर टूर्नामेंट के हिसाब से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स भी तय करने होंगे। साथियों, खेलों की एक विशेषता और होती है। अकेले कोई खिलाड़ी लगातार प्रैक्टिस करके फिटनेस तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उसका लगातार खेलना भी जरूरी है। इसलिए स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स लगातार चलते रहने चाहिए। ये बहुत आवश्यक होता है। इससे खिलाड़ियों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खेल मंत्री के तौर पर आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी खेल प्रतिभा की अनदेखी न हो। साथियों, अपने देश के हर प्रतिभाशाली खिलाड़ी को क्वालिटी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देना हम सभी का दायित्व है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा।
खेलो इंडिया स्कीम ने जिला स्तर पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर कुछ बेहतर किया है, लेकिन अब इस प्रयास को हमें ब्लॉक लेवल पर लेकर जाना है। इसमें प्राइवेट सेक्टर समेत सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी महत्वपूर्ण है। एक विषय नेशनल यूथ फेस्टिवल का भी है। इसे ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए नए सिरे से सोचा जाना चाहिए। राज्यों में जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं वो सिर्फ और औपचारिकता ना बने, इसको हमने बहुत बारीकी से देखना चाहिए। जब चौतरफा इस तरह के प्रयास होंगे तभी भारत एक लीडिंग स्पोर्ट्स कंट्री के तौर पर स्थापित हो जाएगा। साथियों, स्पोर्ट्स को लेकर आज नॉर्थ ईस्ट में जो काम हो रहा है वो भी आपके लिए एक बड़ी प्रेरणा है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं पूर्वोत्तर के विकास को नई दिशा दे रही है। इम्फाल की नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आने वाले समय में देश भर के युवाओं को नए अवसर देगी। खेलो इंडिया स्कीम और टॉप्स जैसे प्रयासों ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है। नॉर्थ ईस्ट के हर जिले से कम 2 खेलो इंडिया सेंटर और हर राज्य में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। ये प्रयास खेल जगत में एक नए भारत की बुनियाद बनेंगे, देश को एक नई पहचान देंगे। आपको अपने अपने राज्यों में भी इस तरह के कार्यों को और गति देनी है। मुझे विश्वास है कि ये चिंतन शिविर इस दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। All of us are here are fortunate to have received the Honorable Prime Minister's address at the significant Chintan Shivir. We are deeply grateful to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for the magnificent and encouraging address. May we now request Honorable Minister of State, Youth Affairs and Sports and Home Affairs, Government of India, Shri Rishi Ramanji to give the opening remarks. आज की इस चिंतन शिविर में उपस्थित मणिपुर के आदरणीय मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह जी, उपस्थित है पंजाब के ऑनरेबल गवर्नर बनवारी लाल जी, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय एवं भारत सरकार की सूचना और संप्रसारण मंत्रालय की आदरणीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सुजाता जी, सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स मीता जी, डीजी साई संदीप प्रधान जी, डीजी NYKS नितेश मिश्रा जी,
भारत की हर एक प्रदेश से आए हुए आदरणीय मंत्रीगण, विभिन्न राज्य से आए हुए प्रतिनिधि और इस चिंतन शिविर में उपस्थित सभी स्टेक होल्डर्स को मैं मणिपुर की इस पावन धरती पर आप लोगों को अभिनंदन करता हूं। चिंतन शिविर के आज की पहले दिन की छत्र है और माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में जो आज की ये चिंतन शिविर हो रहे है, ये एक, मैं कहूंगा कि इसके माध्यम से एक राज्य को दूसरे राज्य को जैसे सीखने मिलेंगे, वैसे ही एक राज्य को दूसरे राज्य से प्रेरणा भी मिलेंगे और उसके साथ साथ एक दूसरे के साथ एक साथ काम करके देश को और भी प्रगति के रास्ते में, उन्नति के रास्ते में, और मुझे लगता है कि और बेहतर हम लोग कर सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की ये भावना, माननीय प्रधानमंत्री जी की ये मार्गदर्शन से जो चिंतन शिविर हो रहे हैं, मैं कहूंगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक सबसे बड़ा उदाहरण ये हो सकता है। और इसके साथ साथ मैं आज इस मंच से आप लोगों से ये आग्रह भी करना चाहूंगा कि इस अवसर को, इस मंच को एक ज्ञान साझा करने वाले मंच के रूप में हम लोग उपयोग करें और देश की स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को और डेवलप करने के लिए और उसके साथ साथ हमारा देश की जो खेल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरह से हम लोग डेवलप करें और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच और कैसे हम लोग दिखा सके। इसलिए मैं ये आग्रह करूंगा कि हर एक राज्य अपना जो सर्वोत्तम जो प्रथा है उसका उल्लेख भी यहाँ पर करे और उसके साथ साथ खेल क्षेत्र में प्रगति करने के लिए किस विषय का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और कुछ कुछ ऐसे सामान्य मुद्दा भी है जो यहाँ पर चर्चा के माध्यम से भी वो हम लोग उसका सुझाव निकाल सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश को एक स्पोर्ट्स हब में रूपांतरित कर रहा है, हम लोग अगर टोक्यो ओलंपिक 2020 देखें, चाहे वो टोक्यो ओलंपिक हो या फिर पैरालंपिक हो या फिर डेफ ओलंपिक हो, जिस तरह से भारतीय एथलीट ने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन किया और उसके साथ साथ जिस तरह से मेडल भी जीतने का काम किया, मुझे ये लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सुदूर प्रसारी जो भावना है, उनका जो विजन है, उससे ही संभव हो पा रही है। हम लोगों ने देखा कि जब कोई भी एथलीट अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में जाते हैं तो जाने से पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल को और ज्यादा मजबूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री सीधा उन लोगों के साथ बात भी करते हैं और उसके साथ साथ जब मेडल जीतकर देश वापस आते हैं तो उन लोगों को संबर्धित भी करते हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के समय में किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में सभी गांव-गांव तक जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने चीयर फॉर इंडिया की नारा भी लगाया और उसके साथ साथ हमारे आदरणीय खेल मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी ने भी उसको और प्रचार प्रसार किया और
खिलाड़ियों को एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए, सी ऑफ करने के लिए भी गया। तो मुझे लगता है कि ऐसा पॉजिटिव अप्रोच से ही देश का जो खेल की जो माहौल वो और अच्छा बन सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि सबका प्रयास, इसमें बहुत सारा राज्य की जो प्रयास है उसको भी प्रशंसा करना पड़ेगा। कई राज्यों में ऑलरेडी जो स्पोर्ट्स कल्चर है वो बिल्डअप हो चुका है, चाहे पंजाब हो या फिर हरियाणा हो। उड़ीसा में भी बढ़ चढ़ कर खेलों के प्रति बहुत ही कार्य हो रहा है। बहुत सारा स्टेट्स है, सबका नाम मैं यहाँ पर नहीं ले सकता हूँ, लेकिन उसमें भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारा स्टेट्स ऐसा भी है जो विपरीत परिस्थितियों से उठकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को खूब कम समय में डेवलप किया। माननीय खेल मंत्री जी भी इसका जिक्र हमेशा करते रहते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था, और वहाँ का खेल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कम समय में जिस तरह से डेवलप हुआ है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसे ही एक राज्यों को दूसरे राज्य की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो जैसे लेना चाहिए, उसके साथ साथ क्या क्या चुनौती आता है और उसके सुझाव क्या है, ये भी मुझे लगता है एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। और उसके लिए ये सबसे बड़ा अवसर है और ये सबसे बड़ा मंच हो सकता है। माननीय खेल मंत्री जी खुद एक खिलाड़ी है और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान और सद्भावना भी है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपना है, जो टारगेट है कि किस तरह से हमारे देश विश्व में खेल क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जो जगह है वो बनाए, इसके लिए माननीय खेल मंत्री जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और मैं कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जिक्र किया है कि खेलो इंडिया स्कीम्स के माध्यम से या फिर जो है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये सभी स्कीम उनका मार्गदर्शन से ही संभव हुआ है और उनका मार्गदर्शन से ही हर साल जो है भारत की प्रांतीय क्षेत्र से खिलाड़ियों का चुनने का काम और प्रतिभाधर खिलाड़ियों को पोडियम तक पहुंचाने का काम उनकी इस मार्गदर्शन के माध्यम से ही संभव हो रहा है। देश भर में हर साल हजारों खिलाड़ियों को हर एक क्षेत्रों से चुना जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। और खेलो इंडिया जो सेंटर्स है उसके माध्यम से भी बहुत सारा खिलाड़ियों को एक बेसिक प्लेटफॉर्म मिलते हैं और उनको अपना मैदान अर्थात कोई भी खिलाड़ी जहां से जिस मैदान से अपना पहली परफॉर्मेंस शुरू करते हैं वहां से लेकर पोडियम तक पहुंचाने वाला स्कीम्स जो है वो भारत सरकार के खेल मंत्रालय के द्वारा किया जाते हैं। 1000 से भी खिलाड़ियों को खेलो इंडिया स्कीम्स के माध्यम से हम लोग जैसे उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, वैसे ही किट भी देते हैं, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन के साथ साथ आउट ऑफ पॉकेट अलाउंसेस भी हम लोग देते हैं। और इसमें से कई प्रतिभाधर खिलाड़ी जो है उनको विभिन्न स्कीम्स के माध्यम से आगे ले जाते हैं और जो देश की एलिट एथलीट है उनके उच्च स्तरीय ट्रेनिंग के लिए, इक्विपमेंट के लिए और उसके साथ साथ उनका आउट ऑफ पॉकेट अलाउंसेस के लिए भी टारगेट ओलंपिक पोडियम जैसा स्कीम्स का प्रावधान है। भारत की शिक्षा व्यवस्था का जो नई शिक्षा नीति हो रही है, आप लोगों को पता है कि उसका माध्यम से भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो है
खेल को प्रायोरिटी में रखते हुए किस तरह से खेल क्षेत्र में और विकास हो, इसका प्रावधान भी किए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देश भर की हर एक राज्य से आए हुए प्रतिनिधियों और आदरणीय मंत्रीगण को कि आप लोगों का क्या सुझाव है, वो सुझाव भी भारत को एक स्पोर्टिंग हब बनाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए जैसे बहुत ही जरूरी है आपके सुझाव, वैसे ही आपके प्रयास भी, सब लोगों का प्रयास ही भारत को एक स्पोर्ट्स हब के रूप में आगे ले जा सकते हैं। और आज इस चिंतन शिविर के प्रारंभ में मैं ये कहूँगा कि सभी लोगों का यहाँ पर विस्तारित चर्चा और मंथन के माध्यम से ही आज का चिंतन शिविर के द्वारा बहुत सारा सुझाव भी सामने आएगा, मैं ये आशा करता हूँ। और ये सभी सुझाव देश की खेल क्षेत्र की जो मार्ग है, इसको प्रशस्त करने के लिए आगे जाकर बहुत ही कार्यकारी होगा, ये मैं आशा रखता हूँ। इसी शब्द के साथ मैं मेरा वाणी को विराम देना चाहूँगा। सभी प्रदेशों से आए हुए सभी आदरणीय मंत्रीगण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इतना भव्य रूप से इस कार्यक्रम को और यहाँ पर स्वागत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और इस राज्य की खेल मंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। We are immensely grateful to the Honorable Minister of State, Youth Affairs and Sports and Home Affairs, Government of India, for the valuable address. Thank you so much, sir. Manipur has won the most improved small state for the third consecutive time after surpassing other northeastern states with its commendable performance in 8 out of 12 categories under the exceptional leadership of Shri Nongthombam Biren Singh, Honorable Chief Minister, Manipur, as revealed by a study of India Today. May we now take the proud privilege of requesting the People's Chief Minister, the heartbeat of the state of Manipur, Shri Nongthombam Biren Singh Ji, Honorable Chief Minister, Manipur, to address the gathering. May I request the esteemed gathering to give a big round of applause. सबको नमस्कार and welcome you all here, the soil of India, Manipur. आज का चिंतन शिविर जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में जो जैसे मणिपुर जैसे स्मॉल स्टेट में बैठने का मौका दिया है, इसके लिए हम पहले I would like to appreciate the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and the Honorable Minister Youth Affairs and Sports Shri Anurag ji. दाइज में जो श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, Honorable Union Minister Youth Affairs and Sports, श्री Banwaral Purohit ji, Honorable Governor of Punjab and Administrator of Union Territory of Chandigarh, Shri Nitish Pramanik ji, Honorable Minister of State, Youth Affairs and Sports, Shri K. Govindas, Honorable Minister, Youth Affairs and Sports, Government of Manipur, Honorable Ministers and Chairmen of other state and Union Territories of Youth Affairs and Sports, Srimati Sujata and Anita, Secretary, Government of India, Dr. Rajesh Kumar, Chief Secretary, Manipur, other officials of Government of India and from other state, senior officials from various state and union territories, distinguished guests and invitees, friends from media, ladies and gentlemen. A very good morning to all of you. At the outset,
I extend my very warm welcome to all the participants of the National Conference of Minister of Youth Affairs and Sports of State and Union Territories, Chintan Shivir. It is indeed an honor for the state of Manipur to host such an event. I also believe that holding such a conference in Imphal also recognizes and highlights the significant contribution made by our Manipuri sportspersons and youth towards nation buildings. Honorable Prime Minister Modi ji also just recently recognized our ancient indigenous games like polo, sagol kangzai, hiang tanaba, yobi lakpi, and many things. Manipur has a proud and a vibrant sporting history and culture. Manipur takes pride as a powerhouse of sports in India, calculating the per capita. Despite a small population, sportspersons from Manipur have brought laurels to India in various disciplines of sports and produced numerous medalists, including 19 Olympians. Sportspersons from Manipur have won 21 Arjuna Awards, 3 Rajiv Gandhi Khel Ratna Awards, 1 Dronacharya Awards, and 1 Dhyan Chand Awards, 6 Padma Shri Awards, 1 Padma Bhushan, and 1 Padma Vishubhan. Northeast is not only blessed with rich natural resource, but has a young and a dynamic population. It connects India to one of the most economically dynamic and politically significant geographies of the world. Our region has the potential to be the growth engine for the country in the 21st century. To translate this into reality, the youth of 2023 need to collectively form a vision and lead a cohesive, coordinated response towards India at 2047. Towards this objective, I am confident that the deliberation in these 2 days of the National Conference will have set a framework for state governments and the stakeholders towards charting a trajectory for the country towards growth and the development of youth and the sports. Under the guidance of and the leadership of the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, sports infrastructure in the country continued to be strengthened under the pioneering initiative like Khelo India. Governments continues to create the ideal environment of sports to thrive in India. As we mark 5 years of Khelo India, the scheme has proved to be a catalyst in turning India into a sporting nation, giving a platform to grassroots athletes and building sports infrastructure across the country. For Manipur also, I am glad that the Ministry of Youth Affairs and the Sports Government of India approved the opening of 32 Khelo India centers across 16 districts of the state. Khelo India State Centers of Excellence in 3 sports disciplines of archery, hockey, and weightlifting will also start very soon. Completion of National Sports University, which just Honorable Prime Minister mentioned, the only sports university of this vast nation was given to Manipur, and now the construction of the building is going on. The university will play an important role in shaping the future of sports in India. I am hopeful that the university will look at the sports as a science and promote knowledge of human speed, strength, power, endurance, and the flexibility to excel in sports. In Manipur, my government is extending every possible support to promote sports culture and sports persons in the state. As an initiative
To encourage the commemorate the sports persons of Manipur, the state government dedicated a Manipur Olympian Park to our sports persons, sportsmen and women. We also signed an MOU with Samsung for the installation of Digital Experience Center at the Olympian Park and the Kumalampak Sports Complex. This will help enhance performance of sports people in the state. Upgradation of Kumalampak Sports Complex through PPP model and the external aided project are also underway. Integration of sports science, use of artificial intelligence and video analysis in the training of young budding intellects in collaboration with private partner will help in developing sports in the state. The state government launched Chief Minister's Akhanaba Sanaroi Singhi Tangbang, special help to the sports persons to promote and encourage the sports person of the state. At a grassroots level, the government is providing financial assistance to more than 250 local clubs. Developments of local village level playgrounds will help develop sports at a grassroots. To preserve and promote the indigenous games and the sports, Chief Minister's indigenous martial art, that as the Honorable Prime Minister just mentioned, Thangta and the Soibi meet, Chief Minister's Sakol Kangse Championship were also started. Over the years, players from Manipur have contributed significantly to football in India. Manipur recently hosted the Tri-Nation International Football Tournament. Manipur also had the privilege to host the Durand Cup last year. The government of Manipur also recently signed an MOU with the All India Football Federation for establishing a Manipur State Football Academy. You will be happy to know that at the Indian State League football tournament, in the various teams, there are around 45 international players from Manipur in the level. 45. And in the women's category, under 17, the Indian teams were taking, from Manipur. There are 7 women from Manipur in the team. To harness the dynamism and the creativity of our youths, scheme like Manipur Startup, Manipur Credit Guarantee Schemes and the Startup Venture Fund have been taken up to promote entrepreneurship and create employment opportunities. Before I conclude, I once again welcome all the participants of the conference to Manipur. You all know, after the Honorable Prime Minister became Prime Minister of India since 2014, the drastic change in the entire Northeast has taken place. Manipur, once known as the troubled state, and even after the 5 p.m., the shops, houses, everything were closed. Now you can see till the midnight, everywhere and every place will be opened and they're enjoying their life. And you know that recently we also host the Miss Femina India for the first time in the entire Northeast. And I am confident that under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, our country will harness our vast sporting talent effectively, and very soon India will emerge as a great sporting nation. Here I want to add a little suggestion to all of you. When the discussions comes, you can interact between yourselves. India can't qualify the World Cup in football also. And that is the reason why we have decided to open one Manipur Football State Academy, along with the associated with the Argentina Football Association. We have already contacted, and if the sports ministry gives some more support, definitely India can join in the World Cup in the next 10 to 15 years. It is my confidence, I believe, what I do. I am certain that the deliberation during the 2 days will
help understand our sports sector better and have set policies and a scientific program for India's emergence as a sports powerhouse in every discipline in the world, and not just only cricket. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Now we would like to invite Shri Banwari Lal Purohit ji, Honorable Governor of Punjab and Administrator of Union Territory of Chandigarh, to address this August gathering. मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री जी वीरेंद्र सिंह जी, हमारे केंद्रीय स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स के केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट केंद्र के श्री निशिक प्रमाणिक जी और यूनियन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी जी और श्रीमती मीना राजीव लोचन जी, यूथ अफेयर्स की सेक्रेटरी, उपस्थित सभी गणमान्य विभिन्न राज्यों से आए हुए माननीय मंत्रीगण, सभी प्रमुख अधिकारीगण, डेलीगेट्स, निमंत्रित सज्जनों और देवियों, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन इसलिए करता हूं कि आपने बहुत जिम्मेदारी ली है। इतनी बड़ी एक महत्वपूर्ण चिंतन शिविर को राज्य में बहुत ही यशस्वी करने की जिम्मेदारी आपने ली है और ये बहुत रूप से यशस्वी होगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरे राष्ट्र में इसका मैसेज जाएगा। माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, इनके बारे में क्या कहूँ, ये हमारे पड़ोसी हैं। मैं पंजाब से हूँ, ये हिमाचल से हैं, और इनका जो मैं एक्टिविटीज़ देखता हूँ तो ये निश्चय ही है कि इन्होंने मुझे तो घायल कर दिया एक तरह से। ट्रमेंडस एक्टिविटीज, ट्रमेंडस डायनामिक पर्सनैलिटी, इस एज में, यंग एज में जिस तरह से ये कार्यशैली और मैच्योरिटी के साथ में काम कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू, यू आर डूइंग वंडरफुली वेल। एज ए सीनियर आई हैव एवरी राइट टू टेल यू, डोंट टेक इट एज ए फ्लैटरी, व्हाट इज द ट्रूथ आई एम टेलिंग यू। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन के बाद में हमें एक दिशा तो मिल गई है, और दिशा मिलके चिंतन शिविर में, ये चिंतन शिविर में जो भी लोग हैं, यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स, सबसे महत्वपूर्ण आज महकमा है। देश का ज्वलंत यदि प्रश्न है, ज्वलंत समस्या है, तो ये यूथ से लेके है, और स्पोर्ट्स एक रेमेडी है समस्या को दूर करने के लिए। देश की परिस्थिति पर जब चर्चा करेंगे, हम सबके बराबर हमको नहीं कर सकते। आज हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है, भारत की जनसंख्या 140 करोड़। कंपैरिजन में यदि देखो, एरिया, यदि हमारे पास जितनी जमीन उपलब्ध है वो है पूरे पृथ्वी पर जितनी जमीन है उसका 2.4% है, और जनसंख्या करीब करीब 16.5%। अमेरिका हमारे से 1/4 जनसंख्या है, 4 टाइम्स हमारे से एरिया है अमेरिका।
तो हमारे यहाँ उस तरह से यूथ की संख्या ज़्यादा है। 15 से 32 साल की एज का हमारे पास में 37 करोड़ युवक हैं। ये हमारे सामने है। ये पूरे चिंतन शिविर में उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उनका भविष्य कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आज है। देश के अंदर 1100 यूनिवर्सिटीज हैं, 55,000 करीब करीब कॉलेजेस हैं। युवक आगे निकल रहा है, पढ़कर आगे बढ़ रहा है, शिक्षा ज्यादा हो रही है, शिक्षा भी बढ़ रही है, साक्षरता काफी बड़ी। हमारे को याद है देश स्वतंत्र हुआ था, हम कहते थे कि शिक्षा खाली 34-35% है, उसमें काफी प्रगति हुई। अभी करीब करीब हम 90% के पास में पहुंचे हैं, 10% रहे हैं। परंतु ये शिक्षा युवक है, प्रैक्टिकल यदि हम देखें, उसका एक सपना अलग है, छोटा मोटा काम करने के मूड में नहीं है। 15-20 हजार 10,000 की नौकरी और मेहनत करके कपड़े काले करे, हाथ काले करे, ये उसकी तमन्ना नहीं है, ये एक कमजोरी है। उसका भी सपना है, वो भी देखता है बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को, बड़े बड़े सेक्रेटरीज को, वो भी देखता है मेरा भी शहर में एक शानदार, बहुत शानदार 3-4 रूम्स का फ्लैट हो, मेरे पास भी एक शानदार गाड़ी हो और क्लब के अंदर गोल्डन कार्ड हो। ये सपना युवक देखता है, इसको तोड़ना है। जॉब्स हमारे पास लिमिटेड है, सर्विस लिमिटेड है, सॉरी, सर्विस हमारे पास लिमिटेड है, पर जॉब्स की कमी नहीं है। करना चाहे जॉब्स बहुत है, उसके लिए एंटरप्रेन्योर्स तैयार करना है। एंटरप्रेन्योर्स, ये मेन चीज हमारा है। यूथ अफेयर्स को यदि आगे लाना है तो एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करिए। स्वयं रोजगार उपलब्धि, उसके लिए तैयार करिए। देखो सक्सेसफुल जितने भी इंडस्ट्रिस्ट हुए हैं, कोई माँ के गर्भ से तो पैदा होते ही तो एकदम से नहीं हो गए। हमने देखा है छोटे छोटे, एक नहीं तो 50 उदाहरण मैं दूं, जो कि एक छोटे से कढ़ाई से चालू हुए। हल्दीराम क्या है, मैंने देखा है, आई हैव ऑब्जर्व्ड हल्दीराम फ्रॉम माय चाइल्डहुड। हल्दीराम कलकत्ते में भुजिया बनाते थे हैं, और मैं इसलिए जानता हूँ कि नागपुर से वो तेल खरीदते थे भुजिया बनाने के लिए, बाद में बढ़ते गया, वैगन खरीदने लग गए, और आज हल्दीराम अमेरिका के कौन से भी टाउन में चले जाओ, हल्दीराम के मिलेगा। सबसे वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स हल्दीराम है। ऐसे कई उदाहरण हैं। यंग एंटरप्रेन्योर्स को आकर्षित कैसे किया जाए, इस पर गंभीरता से आप विचार करिए कि वो अपने काले कपड़े भी हो जाए, परवाह नहीं करे, हाथ काले हो, मेहनत करे, आगे बढ़े, उसकी तरफ मोटिवेट युवक को करना हमारी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी के साथ इस पर चर्चा करिए। बैंकों का भी बहुत बड़ा रोल होना चाहिए इसमें। बैंक शुड बी लिबरल, पॉलिसी बनी है, पर ग्रास रूट पर मेरा अनुभव है कि हम तो कहते हैं पॉलिसी बन गई, केंद्र से आपने बना दी पॉलिसी, और पॉलिसी पहुंचती है बैंकों के पास, पर बैंक आज भी कंजर्वेटिव अप्रोच लेके हैं। जरा सा थोड़ा देखिए तो 10-10, 20-20 हजार करोड़ के यूनिट हैं, वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, उनके रुपए डूब जाते हैं, हैवी लॉस होते हैं, बैंक फिर भी चल रहे हैं, फिर भी बैंक प्रॉफिट में है। क्या हमारे एक छोटा एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है? थोड़ा कहीं डूब गया थोड़ा बहुत पैसा, तो रिस्क लेना चाहिए बैंकों को। आप मोटिवेट करिए, उनको कंपल्सर करिए, थोड़ा लिबरल, यदि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ाना है, लिबरल लोन सिस्टम करना पड़ेगा, इंसेंटिव देनी पड़ेगी, बिना इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर्स 5 ईयर्स विदाउट इंटरेस्ट, ओके गो अहेड। क्या फर्क पड़ता है? 3% 4% इंटरेस्ट लेके डिपॉजिट कितना होता है? 6-7% मिलता है बैंकों को। अमेरिका में 3-4% फॉरेन पैसा बहुत लोन मिलेगा, कम इंटरेस्ट पे मिलता है। इस पर आप गंभीरता से ध्यान करें और इसको आप मॉनिटर करें।
दूसरा ये यूथ अफेयर्स का, स्पोर्ट्स कम महत्वपूर्ण नहीं है। और मैं सबसे ज़्यादा वरीड हूँ, मैं पंजाब में हूँ। पंजाब के मेरे 6 जिले बॉर्डर से लगे हैं, पाकिस्तान की बॉर्डर से। और मैं आपको कहने में मैं हिचकिचाता नहीं, 6 जिले पे बॉर्डर पे मैं कम से कम भी 5 बार गया हूँ 1 साल के अंदर। 5 बार मैंने स्टडी किया है पूरा पंजाब, रातों रहा हूँ, सरपंचों से बात किया हूँ, वहाँ के लोगों से बात किया हूँ, पूरा स्टडी किया हूँ मैंने वहाँ का। और सिस्टम है पंजाब, ये पाकिस्तान डायरेक्ट हमारे से युद्ध कर नहीं सकता, परंतु दुश्मनी हमारे से निकालना है उसको। और सीधा सीधा उनकी स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान की कि हमारे यहाँ ड्रग्स खूब भेजना है, स्मगलिंग करके ड्रग्स भेजना है, स्मगलिंग करना है। जो पैसा है, इतना ज़बरदस्त पैसा है, उसका टेररिज्म में हमारे यहाँ लगाना। ये लड़ाई परोक्ष रूप से हमारे यहाँ वार एक तरह से छेड़ा हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, उसको रोकना है, हमारे यूथ को प्रभावित करना है। पंजाब में मैं काफ़ी घूमता हूँ, हरियाणा की भी मुझे रिपोर्ट है पूरी। परिस्थिति ये है, प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल आके बोलने लग गए हैं कि मेरी सबसे बड़ी चिंता है कि मेरे युवक है वो ड्रग्स लेने लगे। पेरेंट्स आके बोलने लग गए कि आदत पड़ रही है हमारे छोटे छोटे 12-12, 15-15 साल के बच्चों को ड्रग्स की चोरी करने लग गए हैं अपने घर में। तो उनको यदि प्रवर्तित करना है तो सीधा स्पोर्ट्स, आपका स्पोर्ट्स को अट्रैक्ट करिए, स्पोर्ट्स के माध्यम से युवा को अट्रैक्ट होना चाहिए। अभी एक नोबल हमने एक्सपेरिमेंट किया है रिसेंटली पंजाब के अंदर में, चंडीगढ़ में किया है हमने। चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेशन से हमने मिलकर, एनजीओ से मिलकर हमने गली क्रिकेट, 10 दिन तक कंटिन्यू गलियों में पूरे युवा जो हैं स्लम्स में, इधर से उधर से सारे युवाओं को वो गली क्रिकेट करके हमने 8-10 हज़ार युवकों को एट ए टाइम, हर गली में क्रिकेट टीम चल रही है, हर गली में धूम चल रही है, क्रिकेट खेला है लोगों ने। उनके पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट दिया और ये उनको भी मालूम, पेरेंट्स ने आके कहा, मुझसे भी बातचीत किया कि साहब ये तो बहुत शानदार काम होगा, इसमें हमारे बच्चे को ध्यान यदि पलटना है ड्रग्स से तो ये स्पोर्ट्स को इसको करिए। तो मासेज सारे लोग किस तरह से स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर सबके लिए देने का। और केंद्रीय मंत्री यहाँ है, सेक्रेटरी भी यहाँ है, सभी दोनों विभाग के लिबरल रहिए मंत्री दीजिए। और आपकी गैर हाजिरी में मैंने एक बात कही है, बैंकों को जरा कान मरोड़िए। बैंक जो है अभी भी लिबरल नहीं है, बहुत कंजर्वेटिव चल रहे हैं। तो बैंकों को एंटरप्रेन्योरशिप आगे बहुत बढ़ाना है, इस पर आप गंभीरता से विचार करें। और मैं कह रहा हूँ, यू आर द पॉलिसी मेकर्स। ये कोई मामूली चिंतन शिविर नहीं है, चिंतन शिविर कोई XYZ का नहीं है। पूरे स्टेट के मंत्री, पूरे स्टेट के सेक्रेटरी, केंद्र के सेक्रेटरी, केंद्र के केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री सारे यहाँ पर मौजूद है ना। निर्णय हो और निर्णय लेके ऐसा पेपर तैयार करो है, पूरे देश में क्रांति आ जाए, और आएगी, मुझे पूरा पूरा विश्वास है। आई हैव फुल फेथ इन एवरीथिंग कि आप करोगे। और मंथन होता है ना, सागर मंथन, अमृत बांटो, वैसा ही विचार करके एक ऐसा पेपर तैयार हो, एवर लास्टिंग पेपर यहाँ से निकले चिंतन शिविर के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी के आदेशों से। प्रधानमंत्री जी और इस तरह का हो, प्रधानमंत्री जी कंपेल हो जाए हैं, आपकी पीठ थपथपाए, शाबाश, आप लोगों ने ये चिंतन शिविर का पूरा पूरा उपयोग किया है और सही माने में अच्छा काम किया है। मेरा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़ा प्रेमल व्यवहार आपका रहा जब से मैं आया हूँ कल से, शानदार प्रेमल स्वागत, अभिभूत होकर मैं जाऊँगा यहाँ से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरी शुभकामनाएं। Thank you, sir. Now I would request Honorable Union Minister of Youth Affairs and Sports and Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakurji, for the keynote address.
Honorable Chief Minister Manipur, respected Shri Biren Singh Ji, Honorable Governor of Punjab and Union Territory of Chandigarh, Shri Banwari Lal Purohit Ji, Minister of State for Home Affairs, Youth Affairs and Sports, Government of India, Shri Nishat Pramanik Ji, our host for this event, Honorable Minister of Sports, Manipur, Shri Govindas Ji, Secretary Sports, Secretary Youth Affairs, all the Honorable Ministers who have come all the way from their respective states for this Chintan Shivir, respected senior officials. Let me first thank and welcome all the ministers who have come from various parts of the country to attend this Chintan Shivir. A warm welcome to you all. Let me also thank the Honorable Chief Minister of Manipur for making the beautiful arrangements and making our stay more comfortable here. Thank you very much, sir. So this is the third time we are hosting the Chintan Shivir, or sports ministers of all the states in the country. And good to see that Honorable Governor has taken out his precious time to be here. When I spoke to him over the phone, he was concerned and he was very keen also to give his valuable suggestions. What steps could be taken as far as the youth of this country, whether it is in the field of sports or otherwise, and he has expressed his views what we all can do to address the challenge of drug abuse in the country, because youth is the largest stakeholder and they have to play a very, very important role in the nation building process. And I totally agree with him that more and more such programs could be done at the grassroots level by various states and the stakeholders for their active participation. Sir, I have fond memories of the last conference that was arranged in Kevadia, Ektanagar last year in the month of June. As we all know, sports is a state subject and states has to play a very, very important role in the promotion of the sports. But the central government and states have to come together for the promotion of sports and have an open discussion for the advancement of sports and our athletes. And when Prime Minister talks about the cooperative federalism, I think this is the example of that. We will also see the participations and the presentations from the various stakeholders. We'd like to see the respective models of your states, what you're doing in the field of sports and youth affairs, your policies, strategies, which can be shared and replicated in other states. It is of the utmost significance that this Chintan Shivir has been organized in this beautiful state of Manipur, where we're also coming up with the first National Sports University. And I'm grateful to the Honorable Prime Minister who has sanctioned this university for the state of Manipur. The work is in progress. Approximately 900 crore rupees will be spent to create this beautiful university in this part of the country. If you see, the Prime Minister has set the tone of the conference. His address was short but precise but to the point. And I'm sure that we're going to get a lot of suggestions from your side, from reflection to realization to implementation to action, what Prime Minister has spoken. But first I'd like to talk about the state of Manipur. Honorable Governor has talked about the 1.4 billion population. What is the population of Manipur? 36 lakhs.
and look at the contribution in the field of sports. If you look at per capita contribution, they are far, far ahead than much bigger and the large states. So they might be doing something better, whether it is the society, government, or the overall environment for the sports. We have also looked at the traditional sports. Thang Ta is one of the sports being played in this part of the region. Now in our Khelo India scheme, Khelo India events, we have adopted schemes, games like Thang Ta, Clarepattu, Gatka, Yogasana and Gatka. Now these are the traditional games which have been given space in the Khelo India program. We must push these at the international level also. Because if you look at various examples of mixed martial arts to wushu, judo, karate, taekwondo, these are played in the East and the mixed martial arts in the West world. So we need to promote and push our indigenous games at the national and at the international level also, where the federations and the state governments have to play a very, very important role. Recently, Manipur martial arts guru K. Santathoiba Sharma got prestigious award of Padma Shri for his decades-long effort. So, even they are getting recognition at the national level. Not only this, Prime Minister touched upon the game of polo, which is said to have its roots in Sagol Kangzai, which is the traditional sports of Manipur. And if you look at the logo here, it is the polo logo which we have picked. It is not an Olympic sport, but being the conference is being held in the state of Manipur, so we try to reflect that here as well. मणिपुर में कितने खिलाड़ियों ने अच्छा किया होगा? मीराबाई चानू ओलंपिक से 6 महीने पहले इंजर्ड हो गई। भारत सरकार ने वीज़ा भी लगवाया, 24 घंटे के अंदर एथलीट कोच सबके साथ अमेरिका भेजा, पूरा ट्रेनिंग का खर्चा टॉप्स में से उठाया और ओलंपिक में जाकर अगर भारत को पहला मेडल किसी ने जिताया तो मणिपुर और भारत की बेटी मीराबाई चानू ने दिलाया। और ये वही नहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स में जाके फिर रिपीट हुआ पहला गोल्ड मेडल, फिर मीराबाई चानू ने ही दिलाया, तो मणिपुर की बेटी। और यही नहीं, एमसी मैरी कॉम आज तक के सबसे ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे जो रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में मेडल जीतने वाले, वो किसी और ने नहीं, एमसी मैरी कॉम ने जिताने का काम किया, यहीं किया। लेकिन यहीं पर नहीं रुकते। कुंजराना देवी की मैं बात करूं तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल्स हमारे एशियन गेम्स में 1990 और 1994 में वेट लिफ्टिंग में जीता है। तो मणिपुर की ही डेंको सिंह ने बॉक्सिंग में, सरिता देवी ने बॉक्सिंग में, कल्पना देवी, सुशीला देवी ने जूडो में, तो वहीं पर बैम्बम देवी ने और बाला देवी ने फुटबॉल में, बम्बाल्या देवी ने आर्चरी में। ऐसे बहुत सारे आपको रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे जो केवल और केवल इसी राज्य से यहाँ की बेटियों ने, यहाँ के एथलीट्स ने करने का काम किया है। और ये कोई एक दो खेलों में नहीं, अनेक खेलों में ये शानदार प्रयास और ये अचीवमेंट्स मणिपुर की हैं। मणिपुर से आगे बढ़कर अगर मैं देश की बात करूं तो उड़ीसा ने शानदार आयोजन हॉकी वर्ल्ड कप का किया, चेस ओलंपियाड का शानदार आयोजन तमिलनाडु ने किया, बहुत सारे अन्य राज्यों ने, जैसे इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन के लिए मध्य प्रदेश ने वर्ल्ड कप का आयोजन बहुत शानदार तरीके से किया। एक के बाद दूसरा राज्य बहुत शानदार आयोजन कर रहा है। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया का आयोजन अभूतपूर्व था, हरियाणा ने किया, बहुत शानदार था, और अब उत्तर प्रदेश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन खुशी की बात सबसे बड़ी ये है कि जब हरियाणा में हुआ तब 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे और उसमें से 11 बेटियों ने तोड़ने का काम किया। मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ तो 25 नेशनल रिकॉर्ड टूटे, 21 बेटियों ने तोड़ने का काम किया है। सो इफ यू लुक एट द गर्ल्स अचीवमेंट, आई थिंक दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल।
एक समय था मोदी जी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाना पड़ता था, आज खेलों में बेटियां ही आगे बढ़ चढ़कर आ रही हैं। खेलों के क्षेत्र में जहां एक और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, खेलो इंडिया स्कीम 3200 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया अभियान के लिए अगले 5 साल के लिए मंजूर किया है। जहां एक और हमारा बजट 964 करोड़ रुपए का 2014 में था, वो इस साल बढ़ाकर 3397 करोड़ रुपया कर दिया है। बहुत सारे खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर हम देश भर में बना रहे हैं, लगभग 3000 करोड़ रुपया इन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा रहा है। लेकिन मेरा एक अनुरोध आप सबसे रहेगा, छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी आपके राज्यों में 5-5 साल से पेंडिंग है। कोई 4 करोड़ रुपए का, कोई 5 करोड़ रुपए का, कोई 7 करोड़ रुपए का बनना, उसमें भी 5-5 साल लग रहे हैं। हमें इसमें सुधार लाना है, इसको समय पर पूरा करना है। टॉप जैसी योजनाएं, बाकी सबकी जानकारी आपको है, भारत सरकार बहुत कुछ कर रही है। खेलो इंडिया सेंटर्स हमने कहा था हम 1000 खोलेंगे, और पिछली बार हम जहां केवल 450 पे खड़े थे, आज मैं कह सकता हूं हमने 950 खेलो इंडिया सेंटर्स मंजूर कर दिए हैं, और 15 अगस्त से पहले 1000 सेंटर्स खोल दिए जाएंगे। इसमें खोलने के लिए भी 5 लाख रुपया दिया जाता है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना है, और 5 लाख रुपया कोच के लिए दिया जाता है ताकि उसको सेंटर को रन करना पड़े। एक सुझाव पिछली बार आया था, क्या राज्य भी अपने ब्लॉक लेवल पर, ये जिला स्तर पे हमने खोले हैं, राज्य भी अगर अपने ब्लॉक स्तर पर कोचेस की नियुक्ति करे अलग अलग गेम्स के लिए, तो हमारा ब्लॉक स्तर पर भी खेलों को बढ़ावा मिल सकता है। अगर यहां पर एक कोच को लगभग 40 से 45 हजार रुपया महीना मिल रहा है, आप 25 हजार रुपया महीना ब्लॉक पर दे सकते हो, 3 लाख रुपया केवल खर्चा आएगा। और 3 लाख रुपया अगर आप एक कोच पर खर्च करते हो, 100 रखते हो, तो आपका कितना खर्चा आता है? 3 करोड़ रुपया। कौन सा ऐसा राज्य जो 3 करोड़ रुपया खर्च नहीं कर सकता और 100 कोचेस नहीं रख सकता है? और अगर 5 लाख रुपया उनको ब्लॉक लेवल पर अपना कोई कबड्डी का मैट या बाकी सुविधाएं देने के लिए, किसी गेम के लिए देना है, तो कोई भी आप दे सकते हैं। अगर मैं 100 वैसे गिनूं तो वो भी 5 करोड़ रुपया बनता है। मात्र 18 करोड़ रुपए में आपके 100 सेंटर चलने शुरू हो जाएंगे। लो कॉस्ट बट मोर इफेक्टिव। फिर हमने कहा था कि हम क्या, हर राज्य अपनी प्रायोरिटी स्पोर्ट्स चुन सकता है कि हम इस स्पोर्ट को यहां पर ज्यादा बल देंगे, बाकियों को तो देंगे, लेकिन मेडल जीतने का हम इस क्षेत्र में काम करेंगे। उस पे आप सबने क्या क्या किया, अगर उसकी जानकारी यहां पर मिलेगी तो हमें उसका लाभ हो पाएगा। फिर पिछली बार ये कहा था कि टेक्नोलॉजी का हम लोग कैसे उपयोग कर सकें। मैं जब खेल मंत्री बना तो हमने अपने डिपार्टमेंट में शुरुआत की कि किसी भी खिलाड़ी को किसी फेडरेशन के पास या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ना आना पड़े। आपको अपनी पेंशन के लिए, अपनी स्कॉलरशिप के लिए, अपने किसी अवार्ड के लिए, रिवॉर्ड के लिए अगर अप्लाई करना है तो आपको ऑनलाइन करना पड़े। हमने वो पोर्टल बनाकर दे दिया। अब किसी खिलाड़ी को हमारे पास नहीं आना पड़ता है, उसको केवल अपने फ़ोन से या कंप्यूटर से एप्लीकेशन दायर करनी है और उसके खाते में हम डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज देते हैं। ये ईज ऑफ लिविंग हमने करने का काम किया है और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। फास्टर डिस्पोजल हुआ है एप्लीकेशंस का, कम इंटरफेरेंस हुई है स्टेक होल्डर्स की, फेडरेशंस की, एसोसिएशंस की, डिपार्टमेंट की, और प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग हुई है और डुप्लिसिटी को हमने अवॉइड करने का काम किया है। इसी तरह से ही हमने राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 10 का दम का आयोजन किया। महिलाओं के लिए 10 गेम्स देश भर में करने का किया। खो खो, स्विमिंग, एथलेटिक्स, वुशु, कबड्डी, ऐसी अन्य गेमें, फेंसिंग, वेट लिफ्टिंग, इन सब का आयोजन किया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 15,000 से ज़्यादा महिलाओं ने 50 शहरों में इसमें भाग लिया है। ये एक अलग तरीका था महिलाओं की भागीदारी करने का, खेलों को बढ़ावा देने का। इसी तरह से हमने खेलो इंडिया लीग्स वुमेन्स के लिए अलग अलग सिटीज़ में शुरू की है। पिछले 18 महीनों में अलग अलग डिसिप्लिन्स में इसको शुरू किया गया। हॉकी, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग, खो खो, जूडो और वुशु, इसमें बहुत शानदार हमें इसका समर्थन मिला है, बहुत बढ़ावा इसमें मिला है। अब पैरा एथलीट्स अपने आप को कहीं ना कहीं
पिछड़ा हुआ पाते हैं कि राज्यों से वो सहयोग नहीं मिल पाता। हमारा जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी छोटे से बदलाव होंगे, लेकिन वो भी हमारे पैरा एथलीट्स के लिए उपलब्ध हो पाएंगे। पैरा एथलीट, डेफ एथलीट्स, स्पेशल ओलंपिक्स, इन सब के लिए आपका उसका उपयोग किया जा सकता है। माइनर चेंजेस करनी है। क्या हम अपने यहां पर पैरा एथलीट्स के लिए कोई कंपटीशन करते हैं? अगर आप ओलंपिक्स में देखेंगे तो 7 मेडल जीते, पैरा ओलंपिक्स में 19 मेडल जीते, डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल जीते। तो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारत कई गुना ज्यादा अच्छा कर सकता है, और कलेक्टिव अप्रोच के साथ हमारे नंबर्स पेरिस ओलंपिक्स में ही कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर हम अगले 1 साल में भी और थोड़ा ध्यान देंगे, चिंता करेंगे, आप देखिए 3 महीने में आपको इसका बदलाव देखने को मिलेगा। तो क्या खेलो इंडिया यूथ गेम्स होती है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होती है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स होती है, तो क्या खेलो इंडिया पैरा एथलीट्स करना चाहिए, पैरा गेम्स करनी चाहिए? तो उसका भी लाभ हमें मिलेगा, उस दिशा में भी हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। डोपिंग, कोई अच्छा खिलाड़ी हो अगर उसको जानकारी ना हो और कोच उसको मिसगाइड कर दे, या कोई और उसके मन में ऐसी भावना है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा लूं जिसके कारण मेरी परफॉर्मेंस बढ़े, तो क्या है, वो डोपिंग में फंसता है, करियर बर्बाद होता है, मेडल तो नहीं आता, भविष्य पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। नाडा ने बहुत सारी वर्कशॉप्स करनी शुरू की है और हमने नया कानून इस पे बनाने का काम किया है। हम एक्सट्रीमली प्रोएक्टिव नाडा हमारा दिखता है। हमने देश भर में एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सिंपोजियम जो दुनिया भर के लोगों को बुलाकर यहां पर किया। आज भारत की पहचान एक अलग दिशा में दिख रही है। भारत केवल अपने लिए नहीं टेस्टिंग कर रहा, आज दुनिया भर के देशों के करने की दिशा में भी हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी लैब्स को हम और मॉडर्नाइज कर रहे हैं, सेमिनार्स हाफ डे हम कर रहे हैं। नो योर मेडिसिन ऐप हमने लॉन्च कर दी है। मुझे नहीं पता आप में से कितनों को ये जानकारी मिली होगी। हम एप्लीकेशन तो बहुत लॉन्च करते हैं, फिटनेस की भी, नो योर मेडिसिन की भी। मेरी सचिव महोदय से अनुरोध रहेगा कि ये राज्य के हर जिले तक, हर खिलाड़ी तक इसकी जानकारी कैसे पहुंचे, कितने लोग इससे जुड़े, ये बहुत महत्वपूर्ण है। केवल लॉन्च ही नहीं, जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है, सभी स्टेक होल्डर्स की है। तो अवेयरनेस कैंपेन और एजुकेशन इस पर हो, मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा। यूथ अफेयर्स को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत उचित बात कही है। बहुत शानदार आयोजन पिछले नेशनल यूथ फेस्टिवल का हुआ, देश भर की भागीदारी हुई, लेकिन समय के बदलाव के साथ साथ हमें अपने यूथ फेस्टिवल जो 12 जनवरी हर वर्ष स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर हम करते हैं, उसमें क्या क्या और हो जिसके कारण आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कर सकें। ड्रग अब्यूज, इससे मुक्ति पानी है, तो क्या उसका हिस्सेदारी हो सकती है? कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम युवाओं के लिए देश भर में चल रहे हैं, उसकी जानकारी उनको मिले, उनकी भागीदारी हो। Y20 हम देश भर में करें G20 की तर्ज पर। इसके 14 बड़े प्रोग्राम देश भर में हुए, सैकड़ों कार्यक्रम हमने देश भर के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में किए। अब युवाओं के बीच में युवा संवाद से लेकर युवोत्सव जैसे कार्यक्रम हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने पर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के दिए पंचप्रण 5 रिजॉल्व जो उन्होंने जो 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा, और ये पंचप्रण अपने आप में बहुत क्लैरिटी देते हैं कि क्या करना है। क्या हम इसको हर युवा कार्यक्रम का एक हिस्सा बना सकते हैं प्रतिज्ञा लेने के लिए? मुझे लगता है ड्रग्स के ऊपर अभियान तो हमें देश भर में चलाना चाहिए, होम मंत्रालय तो चला ही रहा है, ड्रग्स बेचने वालों का और सेवन करने वालों के खिलाफ भी। लेकिन जागरूकता जितनी ज्यादा होगी, अवेयरनेस जितना ज्यादा होगा, युवा उतने उससे दूर रहेंगे। खेलों की जितनी प्रमोशन होगी, जितना इसके हमारे कंपटीशन चैंपियनशिप्स होंगी, उतना इसका लाभ मिल पाएगा।
मुझे प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में जो मैं अपने यहाँ पर खेल महाकुंभ का कार्यक्रम कराता हूँ, सांसद खेल महाकुंभ, उसकी जानकारी बाकियों को दो। और मैंने भी ये प्रधानमंत्री जी का जो मॉडल गुजरात का था खेल महाकुंभ का, वहीं से देखकर अपने यहाँ पर सांसद के रूप में शुरू किया था। आज सैकड़ों सांसद देश भर में अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इसका आयोजन कर रहे हैं, लाखों खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो क्या हम अपने अपने राज्यों में विधायकों को, जिला परिषद के सदस्यों को, पंचायतों के प्रधान को, वो अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग खेलों के अगर चैंपियनशिप्स और इवेंट्स करने शुरू करेंगे, तो जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नीचे तक बज क्रिएट हो, स्पोर्ट्स कल्चर क्रिएट शुरू हो, एनवायरनमेंट ऐसा खड़ा हो कि कंपटीशंस और इवेंट हो रहे हैं, अपने आप में एक स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को भी इससे बहुत बड़ा बल मिलेगा। पंजाब के हमारे मंत्री यहाँ पर गुरमीत जी, पंजाब में हमारे उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर हैं, इनके यहाँ पर खेलों का सामान बहुत बनता है। तो इंडस्ट्री को भी इससे लाभ मिलेगा, इससे जॉब क्रिएशन भी होगी, खिलाड़ियों को अलग अलग पटल पर अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर भी मिल पाएगा। इससे पूरे देश भर का लाभ मिलने वाला है। और हम अगर आपस में देश कोलैबोरेट करता है, मान लीजिए आपके यहाँ के विधायकों ने बहुत शानदार कुछ अच्छा किया, तो आप चुनिए किस विधायक का सबसे बढ़िया कंपटीशन था, किस खिलाड़ी को वहां से सबसे अच्छा चुनेंगे। क्या हम देश भर के ऐसे खिलाड़ियों का कुछ ऐसा टूर्नामेंट उसके बाद कर सकते हैं जो राज्यों से विधायकों द्वारा किए गए चुना गया है? क्या सांसदों के द्वारा किए गए ऐसे सबसे बढ़िया टैलेंट को चुनकर टैलेंट स्काउटिंग का हम वहां से काम कर सकते हैं? क्या हमारे राज्य की सरकारें उसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं? आपके डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जो हैं, उनके साथ कोचेस मिलकर जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, वहां स्काउट करें कि कौन सा खिलाड़ी किस गेम में सबसे आगे बढ़कर आ रहा है। क्या इसका एक फॉर्मेट डिजिटल हो सकता है कि जब कि कोई इवेंट हुआ, मान लीजिए बॉक्सिंग का हुआ, उसी समय आ जाए कि ये बॉक्सर में प्रतिभा दिखती है राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की, तो हमारे पोर्टल पर जाकर उसको अपलोड कर दें? क्या देश भर के लिए ऐसा पोर्टल हो सकता है जहां पर आपके राज्यों से, जिला स्तर से और ब्लॉक स्तर से आप लोग फीड कर सके? और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया राज्य के हमारे ऐसे जो खेल विभाग है उनसे अपनी जानकारी साझा करके देश भर के लिए, साल के लिए अलग अलग कैंप्स देश भर में आयोजन करने का कोई ऐसा प्रोग्राम खेल संघों और फेडरेशंस इनके साथ काम कर सकती है। सो वी हैव टू ब्रिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स टुगेदर, from the elected representatives to the NGOs to the corporates, from the state governments to the central government, from the state association to the national federations. If everyone comes along, I think we can do wonder. We can perform better, we can have more and rich talent pool available to us. There will be specific target for states to work on specific sports. And we can also look at creating infrastructure for specific sports in specific states. I think till the time we don't have the scientific approach and the use of technology, we can't move forward. We can't have better performance and we can't win more medals at the international level. For that, we need to have a collective approach. And for that, we need this cooperative federalism and the competitive federalism. कंपटीशन के माध्यम से competitive federalism को बल मिलेगा और एक collective approach के माध्यम से हमारे competitive हमारे federalism को भी बल मिलेगा। मैं ज़्यादा इस पे नहीं लूँगा because we are running 45 minutes late. I have a long speech to make. I won't get into that, but we'll try and pitch in whenever we have to. My humble request to all the sports ministers will be, please speak and share your experience. And let us speak to the point, be precise, and give quality suggestions. And showcase what you have done at the state level. And try and learn from others' experience. कई बार दूसरों को सुनना भी बहुत सुखद होता है, बहुत उपयोगी होता है, लाभदायक होगा और हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे।
तो जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमें चिंतन भी करना है, मनन भी करना है, क्रियान्वयन पर भी बहुत बल देना है. So from the reflection to realization to the implementation and to the action, let us work together as a team and create the right ecosystem and the atmosphere in the country to work towards making India the sports superpower. And if we can do that in the other fields in just a limited span, why can't we do it in the field of sports? All we need to see is to take a pledge, to believe in ourselves, to create the right infra, to create the right talent pool, and be true towards the sports person. भाई भतीजावाद सिलेक्शन में ना हो, ये इंश्योर करना है. हमारे खिलाड़ियों की सुविधाएं अच्छे मिले, ये सुनिश्चित करनी है. हमारे खिलाड़ियों को ईज ऑफ लिविंग में बल देना है, ईज ऑफ प्लेइंग में बल देना है, ये सुनिश्चित करना है. और हमारे खिलाड़ियों को सम्मान मिले, उस दिशा में भी हमें अपने कदम उठाने हैं. और क्वालिटी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम बनाने की बात करते हैं, हम डुप्लीकेशन ना करें. क्या है कि एक जिले में 8-8 बन जाएंगे, दूसरे जिले में कुछ भी नहीं है. और आपने भी देखा होगा, कहीं खेल विभाग एनआईटी बना देगा, ट्रिपल आईटी बना देगा, आईआईटी बना देगा, मेडिकल कॉलेज बना देगा, स्कूल बना देगा. वहां के कॉलेज में भी होगा, दूसरे जिले में कुछ नहीं है, वो वैसे ही है. So in the last year, Chintan Shivir, I said, let us come together and give our details what sports infrastructure exists in which part of the state, which district of the state. Unfortunately, we didn't get that data from the states. 1 साल लग गया. मेरा सभी माननीय मंत्रियों से अनुरोध रहेगा, ये आपको इकट्ठा नहीं करना चाहिए, आपके अधिकारियों को करना है. भारत सरकार और राज्य की सरकारें इसीलिए पेमेंट करती हैं. बहुत सिंपल फॉर्मेट होना चाहिए कि 20x40 का इंडोर स्टेडियम कहां पर है, क्या सुविधाएं हैं, 25x30 का कहां पे है, आपका एथलेटिक ट्रैक कहां बना है, आपकी हॉकी टर्फ कहां है, कहां फुटबॉल की टर्फ है. कुछ नहीं है जी, 8-10 चीजें भी नहीं है. टेक्नोलॉजी के जमाने में हमें 1-1 वर्ष इसको इकट्ठा करते लग जाए, और पिछले चिंतन शिविर से हम अगले चिंतन शिविर में आ जाएं तब भी डेटा इकट्ठा ना हो. कैन वी फिक्स अ टाइमलाइन? कितना टाइम है जी, कितने जिलों में? बहुत समय नहीं लगना चाहिए. तभी राइट स्पेंडिंग हो पाएगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो उसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा. ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है. मेरा अनुरोध ये रहेगा, जब भी हमें बोलने का अवसर मिले, आप में से किसी को बोलना, आप उस समय अपना हाथ खड़ा करेंगे, हर किसी को अवसर मिलेगा. बट स्पेसिफिक टू द पॉइंट बोलेंगे तो इसका बहुत लाभ मिलने वाला है. आप चाहोगे सेशन को बढ़ाना, थोड़ा और लंबे देर तक बैठना, हम तब भी बैठेंगे, लेकिन प्रण लेकर जाएंगे कि मणिपुर की धरती, इस नॉर्थ ईस्ट से, जहां छोटे छोटे राज्यों ने देश को इतने मेडल जिताने का काम किया है, हम बड़े राज्य भी संकल्प लेकर जाएंगे कि भविष्य में जब मेडल आएंगे नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ अन्य राज्यों की कंट्रीब्यूशन भी उसी तरह से ज्यादा होगी, और भारत की मेडल की संख्या आने वाले समय में कई गुना ज्यादा बढ़ेगी, और भारत को स्पोर्ट्स सुपर हाउस बनाएंगे, स्पोर्ट्स सुपर पावर बनाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद, और शानदार आयोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. माननीय मणिपुर के मुख्यमंत्री जी, खेल मंत्री जी और सभी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, sir, for your enlightening words and enlightening us all with your ideas and vision. Now I invite all the dignitaries present here for the group photo at the entrance of the convention center to commemorate this wonderful day. Post that, we shall all proceed for tea on the first floor. Thank you. We will all be assembling after 20 minutes at 11:55.
The legendary brand Vespa was born in 1946. The Vespa has a unique design with a V-shaped grille to complement its sleek cast. The Piaggio emblem at the front gives you the pride of ownership, innovative appearance. The design was inspired by the wasp, hence the name Vespa. Adom gari macha darkar oibibra? Supnagi minute kuntragi manungda document ichang changdana Vespa amadi Aprilia gi apamba model sing supna dagi lupa lising tara khaktang puthok piduna loan oina lawba yabagi khudong chaba pizare. Akupa marul kidamak contact tobirau 9089895330 amadi 9615823252 Tulasi Motors Private Limited Thangmaiban amadi Sangai Pro Kudong Chaba si Mangan Bigano ngasi mag-contact tobirau terms and conditions apply. American Oncology Institute AOI amadi Babina Specialty Hospital anigi makhada comprehensive cancer care ga loinana multi specialty service singi kudong saba sing bijari kudong saba sing adudi neurology, urology, internal medicine, general surgery, critical care ICU amadi palliative medicine ni. Office of the Imphal Municipal Corporation Order asigi matungina Imphal Municipal Corporation manungda leiriba ima kaithel sing haibadi Khwairambal ima kaithel Mari Lamnong kaithel Kongba kaithel Singjamai kaithel Pisum kaithel Kaisamtung kaithel Kwa kaithel Tera kaithel Lampen Supermarket kaithel New Lampen Supermarket kaithel hairiba kaithel sing asigi Association Loop amadi kaithel phamiribi ima ibil singi mafamda gariguma kharadang khanganjari madudi Imphal Municipal Corporation gi ayaba yauduna kaithel manungda kaithel lairembigi sanglen sajanba amadi dharmaga mailinaba makhal amatagi oba thabak thorom sing pangthokpa yaroi kaithel phambiribi imaibil singna isagi khudong chab khaki yenglaga makhal amatagi oba mongda semdokpa sadokpa yaksinba sangjanba amadi napsinbna singba toba yaroi karigumba hairiba mathakta paleba thabak thorom sing asi toromlabadi Manipur Municipalities Act 1994 ki makhada action lakhut kani khangal liba K Chandrakumar Singh Municipal Commissioner Imphal Municipal Corporation
Are you looking for an affordable hotel in New Delhi? Well, here it is. Hotel Ambrosia, located at 217 Road number 6, Mahipalpur, just 15 minutes distance from Indira Gandhi International Airport. Isn't it good? Well, we provide 24/7 pickup and drop service, free Wi-Fi in all rooms, 24/7 restaurant service, daily housekeeping, proper car parking, fitness center, and many more. So what are you waiting for? Please contact Hotel Ambrosia, A217 Road number 6, Mahipalpur, New Delhi. Phone number 964-3504-772. To touch the pinnacles of success, get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNACO School, Excellence in Education. Welcome you all to UNACO School Channel Imphal East, an exclusive co-educational residential school located on a sprawling 50 acres campus just 24 kilometers away from Imphal city. The school will be affiliated to CBSE New Delhi. Academic session will begin on 1st April 2023 for classes 4 to 8. Registration commence and open for 2023 and 24 session. The legendary brand Vespa was born in 1946. The Vespa has a unique design with a V-shaped grille to complement its sleek cast. The Piaggio emblem at the front gives you the pride of ownership, innovative appearance. The design was inspired by the wasp, hence the name Vespa. Adom gari macha darkar oibidra? Supnagi minute kuntragi manungda document ichang changdana Vespa amadi Aprilia gi apamba model sing supna dagi lupa lising tara khaktang puthok piduna loan oina lawba yabagi khudong chaba pizare. Akupa marol kidamak contact tawbirau 9089895330 amadi 9615823252 Tulasi Motors Private Limited Thangmaiban amadi Sangai Pro Kudong chaba si manganbigano ngasi mag-contact tawbirau terms and condition apply. American Oncology Institute AOI amadi Babina Specialty Hospital anigi makhada comprehensive cancer care ka loinana multi specialty service singi kudong sabasing pijari kudong sabasing adudi neurology, urology, internal medicine, general surgery, critical care ICU amadi palliative medicine ni. Office of the Imphal Municipal Corporation. Order asigi matungina Imphal Municipal Corporation manungda leiriba ima kaithel sing haibadi Khoirambal ima kaithel Mari Lamnong kaithel Kongba kaithel Singjamai kaithel Pisum kaithel Kaisamtung kaithel Kwa kaithel Tera kaithel Lampen Supermarket kaithel New Lampen Supermarket kaithel Haiba kaithel sing asigi Association Loop Amadi kaithel Phamiribi ima ibil sing mafamda gariguma kharadang khangan jari madudi Imphal Municipal Corporation gi ayaba yauduna kaithel manungda kaithel lairembigi sanglen sajanba amadi dharmaga mailinaba makhal amatagi oba thabak thorom sing pangthokpa yaroi kaithel phambiribi imaibil singna isagi kudong chab khaki yenglaga makhal amatagi oiba mongda semdokpa sadokpa yaksinba sangjanba amadi napsin minasingba toba yaroi karigumba haiba mathakta paleba thabak thorom sing asi torom labadi Manipur Municipalities Act 1994 की मखादा एक्शन लखुतकनी खंगलिबा के चंद्रकुमार सिंह म्युनिसिपल कमिश्नर इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन
Are you looking for an affordable hotel in New Delhi? Well, here it is. Hotel Ambrosia, located at 217 Road number 6, Mahipalpur, just 15 minutes distance from Indira Gandhi International Airport. Isn't it good? Well, we provide 24/7 pickup and drop service, free Wi-Fi in all rooms, 24/7 restaurant service, daily housekeeping, proper car parking, fitness center, and many more. So what are you waiting for? Please contact Hotel Ambrosia, A217 Road number 6, Mahipalpur, New Delhi. Phone number 964-3504-772. To touch the pinnacles of success, get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNACO School, Excellence in Education. Welcome you all to UNACO School Channel Imphal East, an exclusive co-educational residential school located on a sprawling 50 acres campus just 24 kilometers away from Imphal city. The school will be affiliated to CBSE New Delhi. Academic session will begin on 1st April 2023 for classes 4 to 8. Registration commence and open for 2023 and 24 session. The legendary brand Vespa was born in 1946. The Vespa has a unique design with a V-shaped grille to complement its sleek cast. The Piaggio emblem at the front gives you the pride of ownership, innovative appearance. The design was inspired by the wasp, hence the name Vespa. Adom gari macha darkar oibibra? Supnagi minute kuntragi manungda document ichang changdana Vespa amadi Aprilia gi apamba model sing supna dagi lupa lising tara khaktang puthok piduna loan oina lawba yabagi khudong chaba pizare. Akupa marul kidama contact tawbirau 9089895330 amadi 9615823252 Tulasi Motors Private Limited Thangmaiban amadi Sangai Pro Kudong chaba si mangan bigano masima contact tawbirau terms and conditions apply. American Oncology Institute AOI amadi Babina Specialty Hospital anigi makhada comprehensive cancer care ga loinana multi specialty service singi kudong sabasing pijari kudong sabasing adudi neurology, urology, internal medicine, general surgery, critical care ICU amadi palliative medicine ni. Office of the Imphal Municipal Corporation Order asigi matungina Imphal Municipal Corporation manungda leiriba ima kaithel sing haibadi Khoirambal ima kaithel Mari Lamnong kaithel Kongba kaithel Singjamai kaithel Pisum kaithel Kaisamtung kaithel Kwa kaithel Tera kaithel Lampen Supermarket kaithel New Lampen Supermarket kaithel haiba kaithel sing asigi Association Loop amadi kaithel phamiribi ima ibil sing mafamda gariguma kharadang khangan jari madudi Imphal Municipal Corporation gi ayaba yauduna kaithel manungda kaithel lairembigi sanglen sajanba amadi dharmaga mailinaba makhal amatagi ba thabak thorom sing pangthokpa yaroi kaithel phamiribi imaibil singna isagi kudong chab khaki yenglaga makhal amatagi oiba mongda semdokpa sadokpa yaksinba sangjanba amadi napsin minasingba tawba yaroi karigumba haiba mathakta paleba thabak thorom sing asi torom labadi Manipur Municipalities Act 1994 ki makhada action lokhatkani khangal liba K Chandrakumar Singh Municipal Commissioner Imphal Municipal Corporation
Are you looking for an affordable hotel in New Delhi? Well, here it is. Hotel Ambrosia, located at 217 Road number 6, Mahipalpur, just 15 minutes distance from Indira Gandhi International Airport. Isn't it good? Well, we provide 24/7 pickup and drop service, free Wi-Fi in all rooms, 24/7 restaurant service, daily housekeeping, proper car parking, fitness center, and many more. So what are you waiting for? Please contact Hotel Ambrosia, A217 Road number 6, Mahipalpur, New Delhi. Phone number 964-3504-772. To touch the pinnacles of success, get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNACO School, Excellence in Education. Welcome you all to UNACO School Channel Imphal East, an exclusive co-educational residential school located on a sprawling 50 acres campus just 24 kilometers away from Imphal city. The school will be affiliated to CBSE New Delhi. Academic session will begin on 1st April 2023 for classes 4 to 8. Registration come admission open for 2023 and 24 session. The legendary brand Vespa was born in 1946. The Vespa has a unique design with a V-shaped grille to complement its sleek cast. The Piaggio emblem at the front gives you the pride of ownership, innovative appearance. The design was inspired by the wasp, hence the name Vespa. Adom gari macha darkar oibibra? Supnagi minute kuntragi manungda document ichang changdana Vespa amadi Aprilia gi apamba model sing supna dagi lupa lising tara khaktang puthok piduna loan oina lawba yabagi khudong chaba pizare. Akupa marul kidamak contact tawbirau 9089895330 amadi 9615823252 Tulasi Motors Private Limited Thangmaiban amadi Sangai Pro Kudong chaba si manghanbiganu ngasi mag-contact tawbirau. Terms and conditions apply. American Oncology Institute AOI amadi Babina Specialty Hospital anigi makhada comprehensive cancer care ga loinana multi specialty service singi kudong sabasing pijari kudong sabasing adudi neurology, urology, internal medicine, general surgery, critical care ICU amadi palliative medicine. Office of the Imphal Municipal Corporation Order asigi matungina Imphal Municipal Corporation manungda leiriba ima kaithel sing haibadi Khoirambal ima kaithel Mari Lamnong kaithel Kongba kaithel Singjamai kaithel Pisum kaithel Kaisamtung kaithel Kwa kaithel Tera kaithel Lampen Supermarket kaithel New Lampen Supermarket kaithel hairiba kaithel sing asigi association loop amadi kaithel phamiribi ima ibil sing mafamda gariguma kharadang khanganjari madudi Imphal Municipal Corporation dagi ayaba yauduna kaithel manungda kaithel lairembigi sanglen sajanba amadi dharmaga mailinaba makhal amatagi oba thabak thorom sing pangthokpa yaroi kaithel phambiribi imaibil singna isagi khudong chab khaki yenglaga makhal amatagi oiba mongda semdokpa sadokpa yaksinba sangjanba amadi napsinbina singba tawba yaroi karigumba haiba mathakta paleba thabak thorom sing asi toromlabadi Manipur Municipalities Act 1994 की मखादा एक्शन लखुत कनी खंगल लिबा के चंद्र कुमार सिंह म्युनिसिपल कमिश्नर इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन
Are you looking for an affordable hotel in New Delhi? Well, here it is. Hotel Ambrosia, located at 217 Road number 6, Mahipalpur, just 15 minutes distance from Indira Gandhi International Airport. Isn't it good? Well, we provide 24/7 pickup and drop service, free Wi-Fi in all rooms, 24/7 restaurant service, daily housekeeping, proper car parking, fitness center, and many more. So what are you waiting for? Please contact Hotel Ambrosia, A217 Road number 6, Mahipalpur, New Delhi. Phone number 964-3504-772. To touch the pinnacles of success, get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNACO School, Excellence in Education. Welcome you all to UNACO School Channel Imphal East, an exclusive co-educational residential school located on a sprawling 50 acres campus just 24 kilometers away from Imphal city. The school will be affiliated to CBSE New Delhi. Academic session will begin on 1st April 2023 for classes 4 to 8. Registration commences open for 2023 and 24 session. The legendary brand Vespa was born in 1946. The Vespa has a unique design with a V-shaped grille to complement its sleek cast. The Piaggio emblem at the front gives you the pride of ownership, innovative appearance. The design was inspired by the wasp, hence the name Vespa. Adom gari macha darkar oibibra? Suknagi minute kuntragi manungda document ichang changdana Vespa amadi Aprilia gi apamba model sing supna dagi lupa lising tara khaktang puthok piduna loan oina lawba yabagi khudong chaba pizare. Akupa marol kidamak contact tobirau 9089895330 amadi 9615823252 Tulasi Motors Private Limited Thangmaiban amadi Sangai Pro Kudong chaba si manghanbigano ngasi mag-contact tobirau. Terms and conditions apply. American Oncology Institute AOI amadi Babina Specialty Hospital anigi makhada comprehensive cancer care ga loinana multi specialty service singi kudong sabasing pijari kudong sabasing adudi neurology, urology, internal medicine, general surgery, critical care ICU amadi palliative medicine ni. Office of the Imphal Municipal Corporation Order asigi matungina Imphal Municipal Corporation manungda leiriba ima kaithel sing haibadi Khoirambal ima kaithel Mari Lamnong kaithel Kongba kaithel Singjamai kaithel Pisum kaithel Kaisamtung kaithel Kwa kaithel Tera kaithel Lampen Supermarket kaithel New Lampen Supermarket kaithel hairiba kaithel sing asigi association loop amadi Kaithel Phamiribi Imai Bilasing Mafamda Garigama Kharadang Khanganjari Govind Das ji, my colleagues in the Sports Ministry, Secretary Sujata Chaturvedi ma'am, all ministers, secretaries, commissioners, officials from all the various states. Friends, it is a privilege to be here with you today. There are two issues that we will be discussing in the session of Department of Youth Affairs. Friends, the department has been working very hard under the leadership of Honorable Minister Anurag Singh Thakurji, and it is our belief that all activities can be improved upon. We also believe that in an increasingly digital economy, it is important to retool the organizations so that they can meet the needs of youth as in the present day. It is with this belief that we bring two subjects for discussion, and we hope that all of you will be very generous with your feedback and with your suggestions in the true spirit of a Chintan Shivir. The first subject is an upcoming web portal
that is under development by the Department of Youth Affairs. This web portal is meant to offer an opportunity to youth through the country to find and engage with activities that interest them. आज के जो युवा हैं उनके अनेक प्रकार के इंटरेस्ट हैं और हमारी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि उनको इस पोर्टल पे उस प्रकार की एक्टिविटीज़ मिले जिनमें वो रुचि लेते हों. So we have a number of different activities. They can take part in community oriented activities, they can take part in sports, cultural activities. One other activity that they can all take part in is structured experiential learning. As we know, all youth, while they are, whether they are in school or in college, they all need experience of practical real life situations. Governor Banwari Lal Purohit ji also raised this issue कि भाई आज का जो युवा है वो उसकी आकांक्षाएं तो बहुत हैं पर स्वयं रोजगार की तरफ इतना आकर्षित नहीं होता और 20,000 की नौकरी के बारे में काम करने के बारे में उसके मन में कुछ डाउट्स हैं, संशय हैं. So in this portal we would be offering structured experiential learning of 30 to 60 days, 1 से 2 महीने की, which would then also count for credits in their respective colleges. These work experience situations could be either with small businesses or they could be in NYKS offices or in other government departments. And we hope that this would provide them with very valuable experience. Other than this, the upcoming portal would also offer an opportunity to launch all and post all the various events that would be hosted by the department in the coming months. So we have over 600 Yuva Utsavs planned in the next 3 months, and the institution that is organizing the Utsav can post the event on the portal, invite students to register. They get to know what are the kind of activities available, whether it is a painting competition or a photography competition or just a minute. It could be anything. They get to see on a live basis what are the activities that are available. Also, they can all youth clubs, different community organizations can register and post their activity. So that is one of the issues. The other issue that we hope to discuss in today's forum is that of the restructuring of the youth festival. Friends, we believe that the youth festival could be made richer by adding more content, and traditionally we have had cultural themes like folk dance and folk song in group and individual events. In addition to that, we are proposing to identify and allocate specific themes to the various state governments. They would have then time for 4-5 months to organize district level competitions to identify who are the best entries in group or in the individual entry. So we have 5-6 different themes which we are bringing to you today. Youth as job creators, improving millets production, science for society, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऐसी 5-1 थीम्स हैं और इनका एलोकेशन ड्रॉ ऑफ लॉट से किया जाएगा. कौन सी थीम पे कौन सा राज्य क्या करना चाहता है, दैट इज़ कम्प्लीटली ओपन टू देम टू डिफाइन हाउ टू सेलेक्ट द विनिंग एंट्रीज. एंड वी बिलीव कि अगर ये 3-4 महीने में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चयन की प्रक्रिया के लिए कॉम्पिटिशन्स किए जाएं तो इट गिव्स द होल प्रोसेस अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन. It can attract youth, and it is a small youth festival in its own way. So all state governments are welcome to add to this in whatever way they like. So I'll stop here and we can go forward and hear the discussions which will proceed. Thank you and Jai Hind. Thank you, ma'am. Now, starting with the first session on youth affairs, I now invite Digital India team
led by Mr. Gaurav Sharma and Priyadarshi De from the Digital India Corporation for the first presentation. Thank you, ma'am. Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Anurag sir, Honorable Minister of State, sir, Minister of Youth of States from Manipur, a very warm, sorry, there's some low light, I believe. Okay, respected colleagues, esteemed guests, ladies and gentlemen, it is a very warm welcome to this gathering. I am delighted to have you all here today. It is my privilege and honor to present you this IT platform, IT-based youth leadership and social engagement platform. In the meantime, we are calling it the Yuva platform, and it will possess capabilities to enable youth-centric governance. So before going into the details, I'll just give us a brief introduction about Digital India Corporation. We are an extended arm of Ministry of Electronics and IT, Government of India, which is set up as a not-for-profit organization, which was set up in 2001. Currently, DIC leads and guides the realization of vision and objectives of the Digital India program. I'm sure you must have come across with our divisions, which are mostly in limelight, like the NEGD, MyGov, Meeti Startup Hub, India Semiconductor Mission, Bhashni, which is the National Language Translation Mission. So in pursuit of our mandate, we have been ideating, developing, and managing several large-scale national scale platforms like DigiLocker, Coven, Diksha, Umang, Meri Pehchan, and many more. So the concept of this platform was ideated within the Ministry of Youth Affairs to provide meaningful opportunities to youth with credible opportunities, credible options in the public and private sector. That the schemes of youth development and engagement, which can in turn foster youth-centric governance. To realize this vision, we have worked towards three-pronged approach, which is building a national youth registry, creating a database for relevant public and private organizations and repositories of their youth-related services and information, and lastly, to build a youth-centric mobile and web platform, which is intuitive, multilingual, one-stop interface, which facilitates real-time matchmaking of youth with their interests, like cultural events, experiential learning, etc. The digital platform aims to empower and engage youth to become leaders and active citizens in their communities. It provides tools, resources, and opportunities for youth to develop their leadership skills, engage in social impact projects, connect with peers, and contribute to governance processes. The Yuva platform will play a critical role in enabling the youth-centric governance by providing a space where youth can engage, collaborate, and hone their leadership skills. Yes, ma'am. So the youth platform will include features such as leadership development, experiential learning, mentorship opportunities, social engagements, partnerships, and collaborations. Each feature is designed to cater to the specific needs of youth and enhance their experience on the platform. The platform benefits includes providing practical learning opportunities, fostering community engagement, promoting civic responsibilities, building leadership skills, and developing critical thinking skills. It will enable youth to connect with their peers and mentors from diverse backgrounds, collaborate on projects, and make positive impact in their communities.
By providing a space for youth to engage in social national building issues, the platform enable youth-centric governance. The youth leadership and social engagement platform will play a crucial role in empowering the youth and enabling youth-centric governance. By providing a platform for youth, we can, so without further delaying, we'll go ahead with the demo. So this is the first look of the Yuva platform. This beta platform is available at yuva.gov.in. These are some of the landing pages. This talks about the internships, finding opportunities. This talks about experiential learning, the activities that can be made available, the events that are being posted. So I'll just go briefly into the small module, and then I'll request my colleague to give a demo of the platform. So while registering youth, we will be using, to create a verified registry, we'll be using an Aadhaar-based platform, which is powered by Meri Pehchan, which initially captures very basic information about the youth. Then, as and when the platform evolves, it keeps on taking information about youth, which can be utilized for further details. Priyadarshini? So this is a brief demo of the... Good morning, everyone. Good afternoon, everyone. Without further delay, we'll just start off with the demonstration of the platform. To all the dignitaries present here, the idea of the platform is to create a very simple, logistically easy sign-on process for the youth who are not only urban but also rural. Youth who are involved in every activity that currently is, important for nation building. So we go on to the platform demonstration where it takes a very basic Aadhaar detail. And obviously, since Aadhaar is very widely used, it helps the youth to create their own registry, which is verified registry for the youth, which helps them to later on get better, government services. And once we have gone on to the, once the registration process starts, the youth gets a longer registry where they give in their details, their preferences and interests of what they want to do. So once the youth starts registering, they will be able to choose their state, their district, their area of interest, and they may choose more than one area of interest, their area of sub-interest. So if they have, say, interest in sports, so they may choose football, cricket, etc., etc. They may choose more than one sub-interest areas, and they will get opportunities and social engagements along that interest in their geolocated area, which means the youth will be able to locate themselves and around wherever they live or wherever they want to take the internship. That preference will be given to the youth. Obviously, for several youth, we have to also map the university, the college that they are associated with. So that also goes on to the as a part of the platform. Right now, obviously, the platform is in building stage, and we are just working with a very small amount of live data. So we are yet to build the platform that way. So please, I will also ask your forgiveness as this is a beta platform. As we see that the youth starts choosing their industry and area, and they can choose their area of interest and social engagement and experiential learning experiences. Now we get on to the next slide. Where we are talking about how the youth engages, and so who they engage with. So the youth engages with several government, non-government, and other organizations who are associated in the private sector, in the not-for-profit sector, who come into the platform to offer their services. And they obviously also register through the same process. They give in their offerings to the platform, and where the youth can, so it's basically, they will match the youth's preference with the organization's preference, and there'll be a matchmaking, and then the youth will be offered either a social engagement or an experiential learning or a mentoring service that the youth can very easily avail. This is the very quick demonstration of how the partner onboards onto the platform.
As we are as the Department of Youth, we have seen that there are various departmental spaces that we can also include into the platform, like the youth clubs, who are youth-centric organizations who are created by the youth. So we have given them a space to come and talk about themselves and create their own, community spaces inside the platform. So this is how the partners register. Obviously, some of the departmental organizations who need to verify these partner organizations have also been given a space to register here. As and when the platform grows, we will invite all the other departments from all the other government ministries to please come and create their communities here. So we are trying to create a social community from the government sectors, from the non-government sectors, and from the private sectors also, who will come and support the youth in creating their nation-building experience. I'll go to the next slide. Next slide. Next slide. It's not happening. Sorry. Yeah. So when we are looking at the experiential learning experience, and we'd like to talk about this, the experiential learning portal here creates a very unique experience for the youth to come and join and then obtain any sort of learning experience through professional working opportunities with organizations, both government, non-governmental and public, and where these opportunities are going to be about 2 months, I think, 2 months programs, where they'll obtain experiences of learning, experience of working, professional experiences from MSMEs, from government departments, from not-for-profits, and from other industrial departments also. As usual, all these applications are going to be cross-verified by the departments, also by the invited departments that we are going to onboard. Again, how the experiential learning, please play, the experiential, how partner organization onboards onto the portal is demonstrated here. Just to add to what Rajni is saying, for businesses, there will be a minimum cutoff of 40 lakh turnover. Yes. Annually, because that brings them in line with the Udyam portal of the Government of India. Yes. So there will be some checks and balances for every organizations that are onboarded here, including the youth. So we will be verifying the youth with the Aadhaar and other businesses and organizations with the various portals that are added. So for example, if it's an NGO, we'll be asking, we have already connected with the Darpan. For businesses, it will be Udyam. For large industries, it will be the industry standards. So we will try to maintain a huge amount of hygiene in the portal so that the youth experience is absolutely clear, and there is no amount of malice. As it's a government portal, we cannot do that. So we need to make sure that the experience of the youth is absolutely clear and it reaches the youth in a positive way instead of it being in a negative way. I think, next slide, please. Yeah. So as the youth applies to the portal, the youth's application, as the youth registers to the portal, the youth can get a large repository of opportunities, social engagements, experiential learning engagements, and mentoring opportunities. They may select it around the geographical location, and once they select this opportunity, it will reach to the organization where they will accept the opportunity. Obviously, they'll apply to that opportunity. Once they apply to the opportunity, the organization will either select or reject the child. Obviously, sometimes what happens is that organizations also have limited capacity, but then the portal in itself auto allocates the youth to another organization. So there is huge amount of opportunity. The idea is, what we have seen is, there is large amount of opportunity on the ground, which does not transforms in itself to the technology portal, and so the youth is not aware that the opportunity is happening. But what we are doing creates that since we are mapping end to end and we are also reaching to the last mile organization, we are onboarding every organization and every youth. So every youth at least has more than 10 opportunities to apply to during this experiential learning program and further on, of course. This is a small demonstration of how the youth creates their profile. I think by now it's very clear that it's a drop-down form, and children will come and they'll give in their data. As and when required, they can keep on building their profile.
We have also requested the universities to come and onboard with us. So the universities will come in with their coordinators who will verify the youth's data from their sides. Also, because the experiential learning programs have some amount of credits that the universities provide to the youth. So this kind of credit matching will also happen through our portal. Next slide. Further on, very interesting, yes, and I would like ma'am to ask. So basically what all you can see is that there is a backbone which has been created, which has all these modules. The content depends entirely on you. The content depends entirely on the state governments. Every district youth officer, every state government commissionerate, the national department, it will have a dashboard where all these activities are reflected. How many organizations on board is entirely dependent on the efforts made by the states. We have tried to build an API or a handle with the large databases for verification. But that being said, every college will need to onboard those who wish to post experiential learning. Small and medium businesses will have to onboard. So we are collaborating with a few business organizations, but every drop counts. So I would request all of you to see it as an opportunity. Here in the Yuva Utsav, as I said, we have over 600 events lined up. And again, the content depends entirely on you. Some of you would have hosted these Yuva Utsavs in the past. In a Yuva Utsav, there are different kinds of events again which depend on the host college, on the nearby schools, on the government departments who wish to put up stalls. It is available to them and there is a live counter. So everybody can see, students can register both offline and online. So I think we'll stop here. Any feedback which anyone wishes to give, please do write to us. Also, there is an email, Gaurav, support@yuva.gov.in. Is it operational? So please display that. So there is an email ID. Please write to us and tell us what else you would like to have over here. It is still in beta stage. So which is why we have brought it to the Chintan Shivir. Please feel free to offer any suggestions. We hope that this could be a mechanism to engage youth pan-India. Thank you. Thank you, ma'am. Now we have a presentation from the Madhya Pradesh Youth Department. I request Srimati Deepti Gaur Mukherjee, Principal Secretary, Youth Affairs and Sports, Madhya Pradesh Government, to make the presentation. Ma'am, 2 minute wait करना है क्योंकि जिस सब्जेक्ट की presentation में clarity नहीं होगी तो फायदा नहीं है. Because I could see she was telling you about the processes, how to log in, what is the advantage. But to be on the same page, if you have understood it well, why it is being made, what is the larger role of the youth in the coming years, and how they could utilize their services for volunteerism, internship, or the other activities they want to engage in the nation building process. That is why this has been created, to bridge the gap, provide a platform. If you have any specific suggestion to further improvise this, further some more elements should be added to this, that will be more than welcome. अगर वो चर्चा नहीं होगी तो हम आगे बढ़ जाएंगे. ये तो इन्होंने बोला कि लिख के भेज दीजिएगा, तो हमने सोचा हम बाद में लिख के भेज देंगे. ठीक है. बट लेकिन अभी बता सकते हैं. प्रेजेंटेशन की कॉपी है आपके पास? वो दे दें. नहीं अभी तो मिलनी चाहिए. प्रेजेंटेशन की कॉपी, स्पेसिफिक क्या किस पे फोकस होने वाला है और उनमें सुझाव कुछ ऐड करने के लिए तो आप लोग वो जरूर दीजिए. समय कम रहेगा, अगर आप एक हफ्ते के अंदर दे देंगे, विल बी मोर देन हैप्पी टू ऐड इट. And we will also like to learn from various states if they are doing on the similar lines. उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मेरा आपने अगले सेशन में डाल दिया, जबकि वो इसी से रिलेटेड है. हम भी एक युवा साथी ऐप बना रहे हैं जिसको मैं दिखाना चाहता था. आप भी इसी में दिखा दीजिए. आपने एमपी के बाद उस नेक्स्ट सेशन में डाल दिया, वो तो उसको इसी में डाल दीजिए तो हम 10 मिनट दिखा देंगे. वो नेक्स्ट सेशन में नहीं है, वो रिस्ट्रक्चरिंग वाला है. ये तो बिल्कुल रिलेवेंट है, मैं आपको बताता हूँ. एमपी पहले कर ले फिर मैं बताता हूँ.
किसी और के मन में कोई स्पेसिफिक सुझाव होगा तो आप अभी भी लिख के बाद में भी लिख के दे सकते हैं. Respected ministers on the dais, Secretary ma'am, may I request for the presentation to be uploaded? Yeah. So, sir, I think the scene has been set in terms of what Yuva Portal is about, and in MP we've already launched it. So just to give you an idea of what we are envisaging in this, I'll start without any delay. Next slide. So if we look at this, there's a vision of the state in terms of what actually we are concerned within youth development. As we all know that youth, of course, is a separate category, but it's also a very differentiated category. And it's interspersed, and it has what you say, kind of an intervention in different sectors. So when we started this entire process, we said we must look at youth as a specific sector. It may have different interests, but let's look at a different sector. And we wanted to have an approach which looks at just not the skills and the employment part of the youth and their interests, but also their whole personality development, which includes what has been discussed right now in terms of volunteering and in terms of participating in policy making and in implementation. So the first aspect is that we have an integrated approach to youth development. The second is, like it's been mentioned here, that we wanted them to have an exposure of all international and national opportunities in subjects and areas which they are interested in. Third, we want to encourage volunteering for nation building. And lastly, we want some kind of a community engagement for the youth. So there's a slight overlap between volunteering and community engagement, which I will explain as we go along. Next. So we started, sir, you may remember that last year in July, we had invited you for the inauguration of the Youth Mahapanchayat, and there was a weather thing, and so you gave your address on the online. So we started this last year where we had a Youth Mahapanchayat, and the objectives was basically to get a youth from different walks of life across the entire state to come sit down, discuss various issues across certain sectors, come up with certain ideas, and look at how we can engage with them more constructively for the development of the state. So we had a registration process where almost 53,000 youth registered in that. Then we had in each districts, we identified, we called for 7 to 8 people in 6 or 7 sectors. Then they came for the state level Youth Mahapanchayat, which was inaugurated by the Honorable CM and Honorable Union Minister. We had sectoral experts from India and abroad. We had a very, very interactive discussions across 1.5 day, 2 days. And we had 6 or 7 sectors where we had environment, we had sustainable future, we had tech startups, we had youth for democracy, youth for social cause. We also had sports. So we had 7 sectors. And then at the end of it, we had a youth resolution. I'll come to the next slide where we identify. So in the youth resolution, we had certain things, we had certain commitment from the part of the youth, what they would like to see from the government and what they would like to commit to achieve those goals in the government, through government. And then finally, we had some interventions in terms of institutional structures, institutional processes, which they wanted to get established. So we had to have they wanted a state youth policy, they wanted some state youth awards, they wanted an annual Mahapanchayat, they wanted a youth advisory committee at the district level, some youth cells in colleges. And then the rest, if you can see, are the sectors where we had lots of suggestions. And of course, we also had a commitment from the youth to engage in all these sectors. From this Youth Mahapanchayat, the demand came from the youth that can we have a one-stop solution? Can we have one platform where everything which concerns us can be there? Because basically their most immediate interest was of employment. And of course scholarships and things like that. But they said कि हमें अलग-अलग वेबसाइट्स पे अलग-अलग विभागों के स्कीम्स में जाके देखना पड़ता है कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, फिर MSME का अलग है, फिर DIPP का अलग है, महिला बाल विकास का अलग है. क्या इन सब चीज़ों को आप एक जगह हमारे लेकर आ सकते हैं क्या? और क्या फिर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं? So this is what they asked us. Then we sat down with them. It has taken us almost 8 to 9 months to develop this portal, and it's become live. So I'll come to the features of the portal. Next. So like I said, that it came from them. So we have also then come up with a state youth policy, which we have just launched. I shared it with ma'am the other day.
and which takes a lot from the national policy, but of course we have our own elements in it, because we also looked at not just statement of intent, but also in terms of, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह अपने संबोधन में हमसे कहा गया था, तो जो implementation वाला part है, उसको बहुत ही focus दिया है, and in fact we have 18 action points which have to be implemented in the next 1.5 months. So it's not an empty document, it's not a facetious document. Next. तो what are the features of the portal? The first is कि हमने करीब जितने भी हमारे विभाग हैं, प्रमुख विभाग हैं जो यूथ से engage करते हैं, उनकी सारी schemes को इस पोर्टल पे लेकर आया है. Then we have a whole section on the volunteering part where youth can come and volunteer for various activities. There's a whole module on mentorship. There is जैसे MyGov का, you have those 5 engagement platform है MyGov of Government of India, where you have those 5 things like tasks, discussion groups, blogs. So we've taken that model and adopted it here. We're using the MyGov right now, but ultimately we'll move to our own one. Then there's a portion on inspiration where we will be posting inspirational stories. Then there is one on youth achievement where youth will be actually putting forward their achievement stories. And then we have a cultural events thing. So I'll explain a little of each of these features. Next. तो एक यूथ रजिस्ट्रेशन का है हमारे पास एक मध्य प्रदेश में देयर इज अ थिंग वी हैव अ आइडेंटिटी कॉल्ड समग्र आईडी सो दैट्स अ ह्यूज थिंग एवरी हाँ मैम जैसा 5 स्लाइड्स मोर समग्र आईडी है उससे वी आर डूइंग रजिस्ट्रेशन विद फॉर द यूथ एंड वे वी आस्क देम फॉर द एरियाज ऑफ इंटरेस्ट नेक्स्ट These are our schemes. So we have 16 departments, 134 schemes at one portal. And we've also identified the sectors of those schemes so that the youth doesn't have to go around searching कि कौन सी scheme है क्या है. तो यदि आपको employment में interest है तो आप employment search कीजिए, फिर department में जाइए आपको सारी schemes पता लग जाएंगी. Similarly, if interested in scholarship, you can get that. Skill development, admissions, hostel, awards, monthly pensions is basically it's related to a scholarship scheme. So this is how we've categorized all the schemes related to youth on one platform. Next. ये हमारा स्कीम इंटरफेस है तो आप स्कीम की कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको डिपार्टमेंट मालूम है तो डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन सर्च which department you have. So you see labor department, other departments. Most important, we haven't recreated the wheel. हमने दोबारा व्हील को इन्वेंट नहीं किया है जिस विभाग का जो स्कीम है whichever scheme belongs to whichever department, we've just given the link there so that this whole updation business is not, what happens mostly with portals is you can never be updated. So we don't do anything. All they have to do is click that particular scheme and it'll go to the website of the particular department and that's naturally updated. There is no double burden on the department. Otherwise, the departments just don't take interest. So we're just like an aggregator. In today's days, we're just an aggregator of all the things to do with the youth. Next. This is what I was discussing, the MyGov thing. So we have work. I think all of you know the MyGov model, so we're basically following that. In fact, as of now, there are 2 important areas where we are taking people's youth opinion. I'll explain those 2. One is the youth resource centers, which you want to develop at each district level. And the second thing is the Mukhyamantri Apprenticeship Yojana, where it has to be launched. So, उसपे हम लोग पूरे suggestions youth से ले रहे हैं. So the very important thing that who you are actually planning for and implementing for, they are actually participating in the formulation of the policy itself. That itself is a very big thing. And we have beautiful suggestions coming up. Next. We have a whole section on mentorship. Here we again have sector-wise mentors, and यहाँ पे the responsibility is basically with the department, and they know who are the good mentors, so they'll be registering them, and then these mentors will get in touch with the people who show their interest and give them mentorship. Here also we will not recreate. Like mental health, we already have an online portal of Government of India and our own. So we will just give the link. So जहाँ online resources available हैं, we'll be just be linking it. So you're not adding to your logistical issues. Next. Here's the inspiration part where we are as a department, we have small PMU, we will be identifying achievers across various sectors because everybody's interest is different and we'll be posting those achievements here. Next. This is the interactive one. Here youth themselves can come up. They will mention what their uplabdhiyan are, unki kya achievements hai. We will get that verified and then we will put it on the portal so that everybody knows what's happening. Next. Then we have a whole section of cultural programs and activities where we will be posting all the activities. We also have district level chapters in this. Next. What is the current progress so far? So we have 29,000 visitors. We have 6,000 youth who are registered. This I've already mentioned. Next. This is the gender-wise registration and the age-wise registration. Next.
we have almost all districts have been covered. So every district में से कोई ना register किया है, and look at the areas of interest which has come. So we've also identified that. So it's very important for us to see what the data is telling us. It's not just an empty, a cosmetic kind of a thing. So we are working on that part, and it's developing really fast right now. Next. These are the queries which come through Contact Us. So a lot of them was about information about new schemes, technical help, jobs and internships, career guidance. So this also gives us an idea. So now we act as a mediator between the queries of the youth and the concerned departments, and we help them out with it. So we are basically, like I said, we are a mediator. Next. What is the way forward? So we are now communicating with the children who have registered, and then coming up with activities which are on their area of interest. We are initiating the district level chapters, and we're setting up this thing, sir. It's very unique. It's a youth resource center in each of the 52 districts. It's going to basically be a one-stop shop at the district, where we are going to have a youth advisory council, and they're going to work with them to develop schemes. And finally, we'll be organizing some activities. That's all. Thank you. I think very good presentation. And if you look at युवा महापंचायत से जो सुझाव युवाओं के आए हैं, उसके चलते इन्होंने युवा पोर्टल बनाया है. तो आज पीएम साहब भी सुबह कह रहे थे कि हम इस बैठक से भी कुछ निकाल कर ऐसा लेके जाएं जिसके ऊपर आगे कदम उठा सके. तो मध्य प्रदेश ने वो ऑलरेडी किया है, और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी. 1 महीने से कम समय के अंदर आई थिंक मोर देन 29,058 हैज़ ऑलरेडी visited your website. 6,000 plus has already registered, which looks good. I mean, that's a good sign. अब इस पे आपके कोई सुझाव हैं तो एक एक करके. सबसे पहले किसी राज्य के कोई मंत्रीगण बोलना चाहते हैं दोनों प्रेजेंटेशन के ऊपर, तो विल गो बाय द फर्स्ट मिनिस्टर्स, देन वी कैन गो थ्रू द ऑफिसर्स. Any minister wants to say anything or want to add anything or suggest to what we have seen? If no minister is speaking, then any officer want to say something? So I just wanted to and we would, sir, we'll have to look at, ma'am, how we can integrate what we have done and what has been done nationally, so that we don't replicate and duplicate and unnecessarily increase the effort. So we will have to look at some data management issues also, because MP specific to हमारे portal से हो जाएगा. But if we look at the vision of Ek Bharat Shresh Bharat, and we're looking at giving a much wider canvas to youth, then the integration between the portal which you are developing and which we are doing at the state level, that will have to be done. So that will require both technical help from your IT people, and of course we will put in our best. Sure. But we don't want to sort of duplicate it in the sense that... No, I agree, because we have a similar portal which we are launching. Yeah. We have a similar portal called Yuva Sathi, because they have put it on the other. Can you show it here? I told those fellows to put it in the technical team, please. Because it's in the same context. दूसरे में चला जाएगा तो context ही बदल जाएगा. Please show the UP presentation, the presentation from the UP government. नहीं वो ये इसी से रिलेटेड है, वो दूसरे उसमें सेशन में चला जाएगा. इसी हमने युवा साथी ऐप बनाया, मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ. I want to inform all the delegates that we have placed, I want to speak placards on the table. So whenever any delegate want to speak, may please raise the placard. You see, a kind of similar exercise. We in UP, we have 90,000 villages, and we have in each village, we call it Mahila Mangal Dal and Yuvak Mangal Dal, 20 youth, 20, 40. So we have almost a group of 18 lakh youth, which is connected. Now we are, uploading their data. We have reached up to 35,000 now. We are trying to reach up to 90,000. So for them, what we are presuming is that the youth knows everything, but we have proposed a app called Yuva Sathi. So where we, on a single platform, we are giving every information about 350 government schemes, including state government and central government as well, including the hyperlinks which she was talking about, and the registration of youth, the suggestions, the feedback, everything. Yeah, it has come now. Yeah, this is there are two similar kind of presentations. Yeah, carry on. So this is Yuva Sathi app that we've already
put and next, please. Basically, idea is to awareness. We are presuming that youth knows about everything, but no, he has to run to many platforms. So that is why there is a single platform for not only their education, skill, scholarship, jobs, their sports, all whatever a youth needs. Next, hello. This is a single platform, as I already told you, about all these schemes, including hyperlinks for all Government of India schemes as well. So he has to visit, all next, whatever subject he wants to. These are some of the subjects that has been covered: the skill development, self-employment schemes, the startups, health, competitive examination, higher education, job, vocational training, career counseling, sports. Next. This is a process where we also get his the information. As I was telling you, we have 90,000 groups of 20 youth in the villages, rural. Basically, we are concentrating on rural youth because they are the ones who are not aware of many of the government schemes and many of the future potential that they can explore. Yeah, next. This is a hyperlink I just wanted to show. Can you click the hyperlink? Go back. इसको हाँ, yeah, please. ये डबल क्लिक कर दो भैया, इसको खुल जाएगा अभी. हाँ, ये युवा साथी ऐप है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा. This is about 300 services on 165 youth schemes and 85 departments of both Government of India and state government. So they, when you get started, you get OTP and all those stuff on this. Next. ठीक है, next. I don't take much time. Next presentation, yeah. The another thing that we have now tried is, see, we keep talking about startups. I was telling you your National Youth Festival should also include a session on startups. So what is happening is a large number of rural youth, they have ideas, but their ideas are not being fructified. So we are now starting a startup exchange every week, a day in a place where we have identified. We get our rural youth with ideas. We get we have tied up with the Angel Network, UP Angel Network. They are the investors, and we have tied up with our technical incubators, that is the UP Technical University as well as IIM Lucknow. So where we get youth representatives who have ideas, investors who are looking for ideas, and our technical incubators who provide technical support. So this is picking up very well, and we had almost 150 youth with ideas last week only, and we are kind of trying to give it a more speed. As I was telling you, the large rural youth, that base that we have, we can utilize, and we are trying to utilize, and now setting up a center of excellence for startups for rural youth. So this will be a big beginning for rural youth to bring their ideas, and we get investors and the technical support to fructify their ideas. Thank you. So thank you all. I have one basic response to the presentations made by UP and MP. They were wonderful presentations, and they have a very good point. Friends, there is a very basic difference between what the Madhya Pradesh government app and the UP government app has done and what we are doing, what is under development. Essentially, the Madhya Pradesh government app and the UP government app, at least what I could see of it, these are aggregator platforms, as Deepti rightly said, where they bring together links of different kinds of government schemes, as she said, a one-stop shop, where people can find information about that. We have begun from the ground up, where youth spend a lot of time in doing a large number of activities which don't get recorded anywhere. Whether it is part of a Mission Life program, whether it is part of a blood donation camp, whether it is experiential learning or internship,
at the end of the day, they are not able to get a single point certificate of what they have done. So what this Yuva portal will do is कि at any time, any youth club can get, because we have put all that at the back end, they can get a single point certificate of all the man hours they have put in. And that is the USP, that whenever they go for any job application or anything else, then that is something for which they don't have to run around different government offices. Now the thing is that for that kind of single point certificate, the content we need to generate from the ground up. All the links of the different government programs would in any case be there ना, वो तो आप किसी भी पेज के ऊपर, लैंडिंग पेज के ऊपर डाल सकते हैं, वो तो हम भी डालेंगे. But the point is that are you able to get a college or a business to register and to offer what we are calling an experiential learning or a kind of internship? All those processes have been built into that. So a college, Ruia College says कि भाई I am onboarding onto this portal, my students can apply for any experiential learning opportunities. A local business says that they are willing to offer these 3 job roles, whether it is accounts or marketing or whatever may be the case, and then they are able to apply for that. So currently the major problem that we have in this country is that of employability. Na? So this particular app is under development, which is why the structure look like that for you, but the beta version is there, yuva.gov.in. आप कृपया वहाँ पर जाइए, देखिए, अपने सुझाव दीजिए. If we can get, currently the last survey, multi-function survey said that there are 30% youth in this country who are not in education or employment or training. If we can find some way to address their issues, then it will have served its purpose. Please write to us. Thank you. Thank you. अपनी इंट्रोडक्शन देके फिर you can add. नमस्कार सर, मैं अमित तलवार, डायरेक्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स इन पंजाब सर. First of all, thanks sir for organizing this Chintan Shivir and giving us this opportunity to learn from the other states and Government of India, sir. Sir, when the Government of India presentation was happening, I jotted down the few points. One of the point was definitely the same which ma'am has mentioned, that duplication in the states are doing the same effort what Government of India is doing. So whether we can have one unified kind of a platform which states can also use in plug and play model, rather than having different kind of platforms, separate platforms which are not talking to each other, sir. Secondly, sir, I will request that it is on the technical side. When we make the applications, they are centric towards what office is making it. Now, this ministry and the Secretary Government of India उस office के लिए बन रहा है, तो ये होता है कि डाटा अपवर्ड जाता है, पर जो नीचे वाले ऑफिसेज हैं, जैसे स्टेट हेडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, सो उनको अगर कोई डाटा लेना तो वो पहले मेल लिखें, फिर 15 दिन में क्वेरी बिल्डर बनता है तो वो डाटा मिलता है. कैन देयर बी अ रेडीमेड क्वेरी बिल्डर्स फॉर द स्टेट where they can use the data for their state, district magistrates can use the data for their own district, so that they can build their own queries, their own filters, and use that data and make the matchmaking at the local level with their own entrepreneurs. So that will be a helpful feature if that is done, sir. Thank you, sir. Thank you, Amit ji. Sorry, sir. एक मिनट नवनीत जी रुकिए, एक मिनट. अतुल्य जी. Sir, we are also making some efforts in this direction, sir. But our scheme is called non-mudalwan. That basically means I am first, or अर्थार्थ में कहने तो I am the priority. So basically, the young people, mostly in the higher education setup and in the polytechnic and ITI setup, they say, as a matter of entitlement, I want some skill, I want credit, or I want placement. And from the rural areas, we are getting demand that I want linguistic skills, mostly English language and other soft skills. And this is an entitlement base is created. And then it is the duty of the government, the duty of the private sector, through collaborations, through mentorship, we have to fill this mentorship, this gap. So that is the approach which Tamil Nadu is taking, sir. मेरा इसमें कोई सुझाव नहीं है, but I just want to say
सर आई से वी होगा या नेशन होगा तो थोड़ा बेहतर है, बिकॉज यूथ इज टॉकिंग अबाउट राइट्स ओनली, नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. So, I mean, that's your call. I'm not getting into that debate, but that is there. Sir, well, of course, sir, once this Yuva portal, because we have been also taken as one of the states where pilot is being conducted, we will certainly, this will be a good approach in the sense, our approach is limited to higher education, technical institutions, but that doesn't mean that we are representing the entire youth setup. So, with this coming in, we will be making it broad-based. But I just thought I'll share one of the experience of ours. Yes. Thank you. There's one gentleman in the red shirt wanted to speak with you. Ji. Apna introduction dekhe, then you can say. Good afternoon, sir. Sir, this is Jitendra Sonkar, Director Sports Uttarakhand. Sir, Jitendra Sonkar, Director Sports Uttarakhand. Sir, Uttarakhand sir has also designed on a same concept which is called Youth Center, Youth Hub at the level of the district center and at the level of the block center. So the basic concept was behind this कि जो हमारा youth है सर उसको एक proper गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, उसको प्रॉपर एक करियर कंसल्टेशन नहीं मिल पा रहा है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या उसको स्कीम्स हैं और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं, especially for the rural areas or interior areas of the part of the Uttarakhand and other part of the states and country. तो उसको वहाँ पे वो सारी चीज़ें सर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं. सर उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक यूथ हब सेंटर बनाने की बात की थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और ब्लॉक लेवल पे भी, जहाँ पर सिंगल पॉइंट एंट्री सिस्टम में उसको सारी इन योजनाओं के बारे में ट्रांसपेरेंट तरीके से और टाइम बाउंड तरीके से उसको वहाँ पर वो सारी चीज़ें मिल सके, जिससे वो अपने पोटेंशियल को पहचान सके और उसको कहाँ यूटिलाइज करना है, किस सेक्टर में जाना है, वो सारी चीज़ों को वो एक साथ कोलैबोरेट कर सके. देखिए ये कि आम बात होगी कि हम भी ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा है. एक ये है कि क्या सब अलग अलग करें कि एक ही जगह पे सब कुछ, सबकी समस्याओं का हल हो, एक प्लेटफॉर्म मिल पाए. आपका कोई सुझाव इन दो प्रेजेंटेशन हुई हैं सर, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए तो आप वो बताइए सर स्पेसिफिक. सर उन दोनों प्रेजेंटेशन को सर देखा और अभी सर यूपी अच्छी लगी. हाँ सर बहुत अच्छा था. बस उसमें कुछ सुझाव है सर. तीनों प्रेजेंटेशन में सर कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े पॉइंट्स सर मिसिंग है. अगर उनको क्लब करके एक साथ अगर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे ही अगर उसको यूनाइट किया जाए तो वो सारी चीजें दूर हो सकती हैं सर. देखिए मैं इसको अन्यथा आप लोग ना ले, क्या मिसिंग है वो बताना है सर. एक तो यही मिसिंग है सर कि हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल से सर हम ब्लॉक लेवल तक भी इसको हम लेके जाएं, ताकि इंटीरियर पार्ट्स के जो हमारे यूथ है जो सबसे ज़्यादा दिशा भ्रमित है उनको हम मेन स्ट्रीम में ला सकें. ठीक, थैंक यू सर. सर आई एम अभिनव कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स फ्रॉम उत्तराखंड ओनली. जो मेरे डायरेक्टर साहब कहना चाह रहे थे सर कि ये जो हमारे वर्चुअल स्पेस में जो एफर्ट्स हैं सर, इनको रियल वर्ल्ड में भी मतलब साकार करने के लिए we need to develop some physical centers starting with the district level and then perhaps going down to the block level sir. क्योंकि अभी क्या हो रहा है सर कि हमारे जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में या अच्छे स्कूल में जो यूथ पढ़ते हैं सर, उनको तो काफ़ी अच्छी सपोर्ट सर्विसेज मिलती हैं उन इंस्टीट्यूशंस में बाय वे ऑफ करियर काउंसलिंग, जॉब फेयर्स एंड ऑल दैट. बट जो बाकी और यूथ हैं जो उन एलीट इंस्टीट्यूशन से बाहर है, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक फिजिकल हब भी होना ज़रूरी है इन वर्चुअल एफर्ट्स के साथ सर. यस प्लीज. टिंकू जी. नमस्कार. मेरे छोटा सा एक सुझाव है. ये दो प्रेजेंटेशन और बाकी लोगों ने जो बोला है, हम जिसे नॉर्थ ईस्ट में छोटा प्रदेश है तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इनका पास रिसोर्स बहुत है, बहुत बड़ा प्रदेश है, तो उनका जो साइड है वहाँ पे यूथ जाके सर्च कर सकता है. लेकिन मेरे ख्याल में सेंटर से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से इसे एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए है, जिसे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे भी ढूंढ पाए जो उत्तर प्रदेश में जाके उसको ना मैं क्या कर सकता हूँ, और उत्तर प्रदेश वालों को भी पता चले. मतलब एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो, एक सेम डिज़ाइन हो, जिसे सरकारी यूडीवी चलाते हैं या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सारे प्रदेश में एक ही फॉर्मेट में है, ऐसे कोई एक फॉर्मेट में हो तो ज़्यादा अच्छा है.
मतलब वो सार्ट्स करने में या हमारे ढूंढने में, या जैसे त्रिपुरा के बच्चे भी मध्य प्रदेश में कुछ जॉब ढूंढना है या कुछ वहाँ पे लिंक कर जाए तो इजी हो। मेरे ख्याल में एक कॉमन होना चाहिए, एक ही डिज़ाइन होना चाहिए पूरा। Anyone else? Yes, please. Farooq ji. I am Farooq Alam, Commissioner and Secretary, Sports and Youth Welfare, SAM. So it's a very good thing that this Yuva portal is coming up, but we have to popularize it, sir, immediately. So that's the first aspect. And to popularize, what will be the role of Education Department, Sports and Youth Affairs Department? So if you can have one SOP so that we can take immediate action so that it goes right down to the grassroots level, sir. Thank you, sir. Anyone else? Jigar. So with your permission, I would like to respond to few of the things, if you permit. जरूरत नहीं है जी, ये तो feedback session. If anything specific. Okay. नहीं मैम, एक्चुअली इसमें 3-4 तरीके के डाउट्स आए हैं. दैट हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन केयर. लाइक डैशबोर्ड्स हर लेवल पे मिलेंगे. सारे स्टेट्स जो हैं, हाँ, सारे स्टेट्स और सारे वो स्कीम्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें अपडेट हो जाएंगी. So the point about dashboards has been taken. It's a very valid point, and dashboards will be designed so that every district level officer, every commissioner will try to see whether block level dashboards can also be designed, because the data is already there. We only need to provide a user interface. तो वो सब हम दे देंगे. आपका पॉइंट बहुत अच्छा है कि उसको कैसे क्या रोल दिया जाए, कैसे पॉपुलराइज किया जाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कंटेंट तो भाई आप ही लोगों ने जनरेट करना है. जो सरकारी डिपार्टमेंट है वो तो हम लॉग ऑन करा ही देंगे, वो हमारा काम है कराना. बट जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूथ क्लब्स हैं, रेड क्रॉस है और इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉलेजेस हैं, वो DYO will reach out to everyone at the district level. And my appeal to all of you is, please provide support. We are here to only showcase the efforts that are made by you. So we have noted all the suggestions made. Some of them are very good and we hope to use them to build a very useful app for it. Thank you. So thank you all for a valuable session. One thing I would like to say, during the lunch break, I would like one Navneet ji and Deepti ji to be on my table, and couple of more officers who have some suggestions to make regard to Yuva portal, and Meeta ji will be on that table. The second table will be with the MOS Youth Affairs Nisit ji, where anyone has to give suggestions on the National Youth Festival. The ministers and the official could be present there, so that we could also compile a further any such suggestions or which you want to make, we can add on to that. उसको तब सुन लेंगे और डिटेल में. Thank you, sir. With this, we conclude our session 1. Now we move to session 2, restructuring the National Youth Festival. For this, I invite Shri Nitesh Kumar Mishra ji, Joint Secretary Youth Affairs, to moderate the session. Honorable Ministers on the dais, Honorable Ministers present in the meeting, Secretary Youth Affairs Government of India, Secretary and other senior officers from different states, dignitaries, good afternoon to all of you. In this session, we will discuss regarding restructuring the National Youth Festival. Here we will have a presentation by Department of Youth Affairs, and then there will be a presentation by 3 states. In UP has already done their presentation, and then we will be having an open house discussion. Since we are already late, we will be running a very tight schedule. I will now request the team from DOYA to come and make their presentation. Thank you. In the meantime, there is a chair here. Atulya ji, you can come and sit here for the timing, because after that I think you have to make the presentation. और जब इनकी प्रेजेंटेशन चल रही हो तब महाराष्ट्र के रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे, जब जो जाएंगे तब तक त्रिपुरा वाले आके बैठ जाएंगे ताकि समय बच पाए. यू कैन स्टार्ट.
Very good afternoon, Honorable Union Minister of Youth Affairs and Sports, Anurag sir, MOS sir. Okay. So, myself, Devendra Vyas, Assistant Director, and I'm Abhay Shankar, Assistant Director, NYKs. So, today we will be talking about restructuring of National Youth Festival. So, National Youth Festival was inaugurated on 1995 by the then President of India, Dr. Rajendra Prasad. And we have completed 26 editions of National Youth Festival. 26th edition was inaugurated by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji in twin cities of Karnataka, Hubli, Dharwad. This is an annual event organized by Department of Youth Affairs in collaboration with one of the host state of India and NYKS and NSS. And till now we have fixed schedule of National Youth Festival, as Honorable Ministers have said, that on 12th January, on the birth anniversary of Vivekanand ji, we start the National Youth Festival, and it is a 5-day event. We celebrate. Sorry to intervene. It's sub basics, sabko pata Okay, sir. hai, specific pe So, so need for restructuring. So need for restructuring is, as during the inauguration, Honorable Prime Minister has outlined that youth is the youth power. Because of the youth power, we need to, So the intention is that we have had 26 years of National Youth Festival and we have done excellently. But now we need to expand our scope and we need to include the youth in a wider manner so that we move towards the vision of India at 2047, the vision of that. In order to do that, we have suggested that we expand the competitions and expand the additional programs that we conduct in association with the National Youth Festival. Can we go to the next slides, please? Next slide, please. So this is what we are proposing, that first we have group and individual events, because right now, till now, we had like folk song and folk dance competitions in group section. We are proposing that this be expanded to individual level also, existing program, that is folk dance, folk song, folk dance and folk dance for both group and individual sections, and also add a life skill component, because what is it to be human? To have stories, because we have a story of human civilizations. So why don't we encourage our youth to tell stories, to draw pictures, to illustrate what's on their mind, to speak out, to have elocution, photography, to capture the moments in the life that surround us, and have a just a minute, like speak about topics of their choice. So just suggested topics, and we are expecting that esteemed guest would chip in during the discussion session, and we can add on to this what all competitions we can have. Next slide, please. So these are the 5 themes which we have identified. On these themes, the competitions or workshop will be organized. So these are in line with the mission 2047, which we are talking about. The first one is youth as job creators. So as the governor sir also said कि हमें अभी मतलब youth को job seeker नहीं, job creator बनाना है. तो job creator बनाने के लिए success stories जो हैं states की, for individual की, groups की, वो success stories जो है इस National Youth Festival we can exhibit. So Honorable Minister said that it's a cooperative federalism, so we can learn from each other. तो ऐसे success models हैं जिसमें से एक स्टेट दूसरे स्टेट से सीख सकता है, एक इंडिविजुअल दूसरे स्टेट से सीख सकता है. तो फर्स्ट थीम इज द यूथ एज अ जॉब क्रिएटर्स. सो एक बेस्ट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, या फिर बेस्ट एसएचजी जो कि वुमेन एम्पावरमेंट का एक टूल एसएचजीज है. तो ये ऐसे बहुत सारे एसएचजीज हैं जो बहुत केपेबल हैं. दे कैन बी एज सक्सेस मॉडल्स. जो एक स्टेट में है वो दूसरे स्टेट में रेप्लिकेट हो सकता है. बेस्ट स्टार्टअप्स इन एनी सेक्टर्स, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं इन टेक सेक्टर, इन एग्री सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, द लॉट ऑफ सेक्टर्स जहाँ पे छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, उसको भी शोकेस हम लोग वहाँ पे एज ए इंडिविजुअल एज ए ग्रुप कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज एक भारत श्रेष्ठ भारत. तो ऐसे ही बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं. द स्टेट गवर्नमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसे इनिशिएटिव्स लेता है जहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो ग्रुप जो इवेंट्स हैं, ग्रुप हैं जो ऐसे बहुत अच्छा करते हैं, वो ग्रुप को भी यहाँ पे शोकेस किया जा सकता है. और जैसे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स भी एक भारत श्रेष्ठ भारत है, वो अलग अलग कैंप्स ऑर्गेनाइज करता है. इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज, नेशनल इंटीग्रेशन, नॉर्थ ईस्ट स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, नेशनल यूथ फेस्टिवल. तो उसमें जो बेस्ट कैंप मेंबर्स हैं
इन EBSB में क्या होता है, दे पीपल लर्न अबाउट ईच अदर्स कल्चर, जो यूथ है कल्चर के बारे में 10 सेंटेंस है, कोई उड़िया है वो उड़िया जाता है साउथ में, तमिल वो 10 सेंटेंस तमिल के सीखता है, तमिल जो समवन फ्रॉम तमिलनाडु वो जाता है कश्मीर में, तो कश्मीर में से 10 कश्मीरी लैंग्वेज सीखता है। तो वहाँ पे नेशनल यूथ फेस्टिवल में दे कैन एक्ट एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो वहाँ पे आके वो लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करके दे कैन प्ले एज ए रोल मॉडल ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट वन इज एज ए ब्रॉड थीम इज ए साइंस फॉर सोसाइटी, science and technology for society. As this year we are celebrating the International Year of Millets 2023, so improving millets production through science. जो साइंस मॉडल्स हैं, जैसे हमारे स्कूल्स में भी हैं साइंस क्लब्स हैं, हमारे कॉलेजेस में साइंस क्लब्स हैं, टेक्नोलॉजी क्लब्स हैं, रोबोटिक्स क्लब्स हैं, बहुत सारे क्लब्स होते हैं। तो थ्रू दोज क्लब्स हम लोग मिलेट्स का प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, एक जो बिहेवियरल चेंज होता है कि हमारे डाइट में कैसे मिलेट्स को इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे फिट इंडिया एट गुड एग्जाम्पल जो ऐप है वो आपका पूरा स्पोर्ट्स का या फिटनेस का ट्रैक करता है। सो वाई नॉट वी कैन गिव ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हमारे यूथ को भी कि आप एक मिलेट के लिए आप एक ऐप बनाइए जिसमें ऐसा हो कि वो रेगुलर डाइट में कैसे आ सकता है, मिलेट्स के फ़ायदे क्या हैं, कितना न्यूट्रिशन है, वो सब एक ऐप में आए। तो जस्ट दिस इज अ सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि एक ऐप में कैसे आ सकता है। उसके बाद मिलेट्स में जैसे एग्री यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जा सकता है, उनका प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हेल्थ एंड फिटनेस। जो एडवेंचर कैंप्स हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, उनको पॉपुलराइज करते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे जैसे रिवर राफ्टिंग है, जॉर्बिंग है, ये एक मतलब बहुत बड़े स्केल पे भी होता है, बट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, कुछ विलेजेस में, कुछ ब्लॉक्स में ऐसे छोटे छोटे एडवेंचर कैंप्स, एडवेंचर गेम्स होते हैं जो इतने आइडेंटिफाइड नहीं है, इतने पॉपुलर नहीं है। तो जो छोटा ग्रुप जो इनको ऑर्गेनाइज करता है, वाई कैन नॉट दे कम फॉरवर्ड नेशनल यूथ फेस्टिवल में, वो अपनी प्रेजेंटेशन दे, एंड इफ दैट टेरेन परमिट्स वो क्यों ना डेमोन्स्ट्रेशन दे। तो उनको आइडेंटिफाई करना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। देन जो लास्ट ईयर 26th NYF टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑनरेबल मिनिस्टर सर, फर्स्ट टाइम नेशनल यूथ फेस्टिवल में इंडिजिनियस गेम का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। तो 7 to 8 teams demonstrated the indigenous games, and our commissioner sir from Karnataka is also there. He has witnessed कि मतलब बहुत सारे लोग, the local people were also मतलब वहाँ पे एक्सपोज हुए उसके इंडिजिनियस गेम्स कितने ज़्यादा, मतलब पीपल वर ऑन एज ऑफ देयर सीट थ्रू आउट द इंडिया, जो 3-4 दिन पे डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। एंड योगा डेमोन्स्ट्रेशन, ऑब्वियसली वी हैव गिवन द वर्ल्ड योगा डेमोन्स्ट्रेशन में जो बेस्ट योगा टीचर्स हैं और एनी अदर इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ योगा जो स्टेट्स ने किया है, दैट ऑल्सो कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड और प्रेजेंटेड देयर। जैसे सर ने बताया था इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे लाइक इट कैन ऑल्सो बी अ पॉजिटिव कैंपेन ऑन हाउ टू हैव अ प्रोडक्टिव लाइफ अवॉइडिंग ड्रग्स। There is a drug menace is actually affecting youth, sir. We can also have 2 minute बचते हैं आपकी presentation. Models on drugs and also on mental health is a new issue that can also be added to this. So we can present the best models. Next is on Mission Life. We are having a issue. There is no Planet B. So we need to integrate Mission Life onto the lifestyle of every citizen, especially the youth, because they are going to be the leaders of tomorrow. And next, it's about Yuva Kriti, that is the arts and craft exhibition that we have been doing every year. So the suggestion is that we expand the scope of this Yuva Kriti to include 2 more things. That is, one is textiles and second is agro-based products. Because India is the land of textiles from Harappan era, so we have cotton, we had cotton. So now what we can do is we have more than 35 traditions of handlooms, and also we have this fusion textiles coming up. So we can have models where how we can showcase the new innovations in this sector onto this Yuva Kriti exhibition cum sales platforms. Every year we sell out in the second day itself, it doesn't go to the 5 days. So this is one thing we can do. This is a competition strategy, so every state will be allocated one theme. On that theme, on these activities, these activities are only suggestive. States are free to add any more activities. So competition selection competition strategy क्या होगी कि हर state जो theme allocate होता है from district, they'll organize one competition and district to state. The competition will culminate on the state level, so that on national level जो best of the best state का है वो state वाला वो represent वहाँ पे national youth festival में कर सके. Next, this is a suggestive breakup of the participants.
100 state का 100 participant का जो contingent होता है. So this is not a hard and fast composition like some states may have some more innovation, some other sector. So this is again open to, it's flexible depending upon the state's interest, but this is just an indicative breakup of 100. Next slide, please. These are the activities which are organized by host states and NYKS and NSS. So which are young artists with painting, sculpture, adventure camp में, that I have already mentioned, adventure camp में jorbing activities होती हैं, food festival and the music shows. Next, this is the proposed calendar. Today, this month we will identify the themes and allocate activities. Yes, yes. So identify your themes. Today we'll be identifying, we'll be allotting the themes, and by May the states can finalize the activities, and from July to September the district and state level competition can be held. On the final state contingent in October, November, the final state finalization of state contingent can be done. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for the presentation. And now we have a presentation from the state of Tamil Nadu. Honorable Minister, sirs, I will just initiate it and then my colleague will take it over. Sir, in 2008 we had conducted the Chennai Youth Festival, and the Youth Festival has totally changed from those days, and it has become it is on a much bigger canvas. Our main suggestions are, sir, that to make it broad-based, we have to conduct state youth festivals now so that the best of the districts can come in. As of now, it is basically an NSS, NYKS affair. We have to bring more youth to it, sir. We also wish that there could be artist camp, photography and short film camps, and if possible, a fashion. Honorable dignitaries on and of the dais, அனைவருக்கும் வணக்கம். Next slide. Sir, we all know that the rising aspirations and dynamic expectations of youth will also have a spillover effect on the largest youth congregation, that is National Youth Festival. So it is with this understanding that we are looking at restructuring and reimagining the National Youth Festival. And we all know the present architecture and the all-encompassing nature of the present architecture. Next. When we reimagine and relook at it, we relook at it from the perspective of intergenerational cultural spaces. When we say this, the idea is, we all know that culture is an important binding factor in our country. We also, beyond that, we also look at it as a knowledge transfer tool, particularly on the platform of National Youth Festival. When we say IGCS, what we mean is that the buzzwords that we would like to highlight here is collaboration and co-creation. Basically, across the full spectrum of the design and implementation of National Youth Festival, a youth will guide the entire exercise. That's what we mean by intergenerational cultural spaces. Next. So, looking at the reimagine and restructuring perspective, a few ideas that we thought we will present here is: one, the increase in number of competitive events with focus on team and group events rather than individual events, because the team and group events will bring in the element of teamwork, team spirit, and will be able to bring in larger number of participants in the entire festival. And participation in non-competitive events through district and state level selection procedures, a strict selection procedure, so that the best talent would be available at National Youth Festival. Inclusive spaces, we speak a lot on Divyang empowerment and transgender rights these days, and we strongly believe that the National Youth Festival should reflect what we speak at the national level on Divyang rights and transgender rights. We all know the kind of power that our para athletes show on the world stage. So if that could be done, why not their talent across culture and other spaces with NYF as the platform. Youth exchange is something that we feel should happen in the run-up to the National Youth Festival, so that youth from various states can visit other states, probably 1 or 2 states, partner states could be created, and then they can have a feel of what will happen at the National Youth Festival. We also believe that youth parliaments, both at National Youth Festival and taking inspiration from it at district and state levels, probably one theme could be selected every year, and the teams from the states could be encouraged to speak, as part of the National Youth Parliament, also with an idea that it will deepen the democratic process and make them understand the importance of the democracy in this country.
Themes in focus we have all discussed, but we also felt Digital India could be an important theme that we should not miss on NYF platform. Startup India's, the kind of startup power that we are seeing should be made visible on the stage. Gig economy, most of the youth in our country are part of gig economy in one way or the other, and that should be presented there. Upskilling and entrepreneurship, which is the recurrent theme that we are all talking about today, should be part of our NYF platform. And NYF compendium is what another thing that we felt about. On various thematic events, there should be a compendium co-created by the youth by the end of the National Youth Festival. Next. Next, please. So, and in the existing framework, we looked at New Generation Art Box, Canvas of Collaboration, Fusion Food, Nature Walks and Heritage Walks, and Youth Summit. Next. When we say New Generation Art Box, when we bring either competitive or non-competitive events, the idea is to focus on contemporary forms and styles of expression, particularly recognition of digital art forms and non-conventional mediums, where youth spend most of their time these days, like short films, documentaries, animation art, stand-up comedies, and digital posters. Next. Canvas of collaboration, this could be basically in the non-competitive mode, basically to create a mural made from art forms of different states, to highlight the spatial and chronological expanse of art evolution of our rich country. Also, it will stand as a symbol of unity and integration, the guiding principle of Ek Bharat and Shresth Bharat. Next. Fusion food, the guiding philosophy being integration through ingredients. That's the idea. Rather than showcasing just our cuisine, we can create a concept of fusion food where people can adopt other styles and bring in a fusion food to the food festival. Last. Next. Nature walks and heritage walks, we do have a mindfulness session in the morning, so that could be converged with the nature walks and heritage walks with the emphasis on storytelling by the youth who come over there and tell the stories from their own regions and states. Next. Youth summit, of the youth, for the youth, and by the youth. Rather, the critical thing here being the shift from lecture mode to a workshop model, and suggestive themes being understanding religion in all forms, since we are commemorating Swami Vivekananda, which is an extremely important thing. Upskilling and entrepreneurship, voting as a democratic right, mental health matters, which should be spoken about, for this day youth, and substance abuse and gender rights. Next. Thank you, sir. Thank you so much for the presentation. Now I request a representative from Maharashtra. Thank you so much, and that will be followed by a presentation by Tripura. Thank you, sir. Respected dignitaries. May I have the presentation, please? So sorry, we are just talking about an idea, ma'am, because I have see. The whole idea here we are talking about is agriculture being the backbone of this country. Youth in agriculture need to be given a special attention. Problem with agriculture in state like Maharashtra, where agriculture is basically doing so well, we are #1 in most of the exports. That is and nobody wants to be in agriculture anymore. How do we attract youth in agriculture? How do you make agriculture more attractive, more fashionable, more technology driven, where the youth can take aspiration to be an agriculturist, to be a professional in agriculture business? And that is where I think the theme should, see, the point of entire having this youth festival is to inspire youth, to inspire them to do something which through which they can contribute to the society, to the contribution of national development. And that is where I'm coming from. Next, please. Next, please. Around 58% of the agriculture workforce is below the age of 40. 52%, two examples, UP, Bihar, Maharashtra, more than 52% youth are engaged in agriculture. 12.9% is employment. We have a best option or a best scene where we can actually promote youth to do something in agriculture, because that's what you cannot change that number in recent years, because we have a good technological ecosystem thriving. More than 50,000 startups in India in 2021. Social entrepreneurship is also increasingly, people are now interested. Literacy rate is also rising. So this is a good ecosystem where we can actually look at it in a different way. Next, please. Maharashtra, as I said, we are highest average, GDP, 30% population is within this particular range. What we have, we are #1 in production, we are #1 in exports in many things, and so
22% of agri-tech startups in India belongs to Maharashtra, and out of many of those startups, they belong to in the sector of agriculture. And around 47.50% of youth workers engage in agri-allied activities. So when you talk about youth festivals, when you talk about all these things, most of the time, urban or peri-urban youths are normally engaged. Now what we are saying that we must encourage, we must acknowledge efforts taken by youths in agriculture sector. We must promote those youths to do something better, and which is, which can be example for the entire country. I'm just giving you few examples, sir. These are the case studies or the case which can inspire this particular dialogue here, and we can come up with certain ideas which can be incorporated in our youth festival. Next, please. So adopting, what are they doing? What are they doing? So we are adopting new technologies and scientific methods, mechanization, IoT-based solutions, integrated pest management systems, soil testing, etc. Government initiative, there are definite government initiatives of financial assistance, training, marketing, etc. But most importantly, we are now looking at climate resilient smart agriculture, which is very important in terms of climate resilient technologies. This is precision farming, ICT interventions, and of course agri-startups. Agri-startups are focused in the areas such as agri-tech, farm-to-fork supply chains, and sustainable agriculture. These are the areas I think we should concentrate on in our basic themes, where you must promote these young entrepreneurs, young agriculturists who are doing something in these sectors. Next, please. Next, please. I'm just giving you a few examples. Crop subsidy initiative, this is an example could be set for the entire country. Pest in agriculture is a major disaster. Now, more than 80,000 youths in agriculture youths are engaged in this, where we are giving them a platform where they basically become partners with the government. They give lot of inputs on pest incidence, pest progression, pest infestation in various crops. The entire data is collected centrally, and then agriculture advisories are issued, and then control measures are taken. The most of the important success story is the, if you understand agriculture, in cotton, the fall armyworm is the major challenge, that the entire crop is swept away in weeks' time. For this, with this crop sap, we are now, for last 10 years, there is not a single incidence of fall armyworm in cotton. We are not doing it for 22 different crops, and most of these basically farmers are youngsters. Next, please. Sahyadri is a success story. 18,000 farmers, most of them are young farmers. They are engaged in basically developing a supply chain. It started with grape. Now they are doing vegetables, then other fruits also, where the Sahyadri is again a farmer organization, gives them inputs, scientific know-how. They give them entire end-to-end blockchain technology solution and then marketing. This has revolutionized the entire agriculture supply chain. These youths, whatever they have done needs to be acknowledged, and these kind of components should be included. Next, please. I'll just give you two and then I'll stop. Kisan Connect started with 11 youths came together, started this app. Only it was a WhatsApp group. Now it has completely transformed into an IoT-based solution company. They are using technologies. They are now gathering. They have their own pack houses, their own marketing channels, and this is complete D2C, direct to customer service initiative, which was, next please. And this is the last one, COVID Veg initiative. More than 22,000 farmer groups, mostly women, mostly young women farmers participated in this. It started as a COVID initiative where they collected vegetable and supplied to cities, but then we realized there is huge potential in peri-urban areas also. And now it has been established, these groups are now thriving. There are more than 44,000 groups which are now engaged in supply of various food items and vegetables to urban cities. Next, please. Science Food Society, again, a very good initiative, dehydration technology for food preservation and food chain. More than 800 micro-entrepreneurs, mostly women-run, are basically engaged, and they are now catering to 18,000 different other enterprises. And again, this has become a huge kind of a business initiative among youth. So, sir, my request would be, we need to acknowledge these things. And then youth in agriculture is very neglected community. And I think if we could incorporate something in this,
We will definitely, for science and technology, would be going for Maharashtra, and we will be definitely focusing on particular youth engaged in agriculture henceforth. Thank you very much. Thank you so much for your presentation, sir. And now I request a representative from Tripura. Namaskar, sir. Dignitaries on the dais and dignitaries who are available in this august house. Basically, the restructuring of National Youth Festival is derived from the lessons learned from the 26th National Youth Festival held in Karnataka. With the Prime Minister's speech there, the can-do spirit of our Yuva Shakti. Can I go to the, yeah, next. Spirit of Yuva Shakti inspires everyone, and there were certain other themes. Then basically the theme was that Vikshit Yuva and Vikshit Bharat, the diverse cultures on a platform, single platform. So these are all the lessons we have learned from the National Youth Festival held there earlier. Tripura is a hilly state with a composite culture of, next slide please. 19 tribes, Bengalis and Manipuri. The Youth Affairs Department has been doing the routine activities. Apart from that, we give priority for mobilizing the youth forces towards the right direction from the lessons we learned from the National Youth Festival held last. Next. The empowering the youth via various activities actually is being emphasized so that the success stories which are being built up out of this empowering the youth can be the success stories when we go to organize the next National Youth Festival. These are creating sustainable environment. We engage the youths with the Pollution Control Board against the single-use disposables, tree plantation and other activities. Enabling youth to provide youth services, we also engage the youth in leadership building exercises. We train them. We also emphasize on imparting quality education in schools and colleges, skills and vocational education, building entrepreneurship in collaboration with various departments. Then there is emphasis on adventure sports, healthy behavior and lifestyle. We go for IC activities on HIV and AIDS, and then we also go for formation of the youth clubs, youth participation for disaster management, social welfare and training for self-defense, particularly for the women volunteers. We also engage the clubs for various other activities and protection of youth from drug abuse. For that we conduct different sports activities, street drama, seminars in 22 degree colleges in Tripura. We also focus on disabilities and youth at a risk. Then we conduct awareness by the NSS on the use of social media, because there is cyber crime. With the help of the police, cyber crime department cell, we organize those type of awareness activities so that the youths are not involved in cyber crimes also. Then we want to inculcate the youth on patriotism, harmony, national integration. Next, please. Next, please. Yeah. Then we focus on gender empowerment. And we have planned for the next 4.5 years so that we can accomplish those gender empowerment through financial assistance to female students. Then Mukhya Mantri Kanna Atmanirbhar Yojana, there will be, to the meritorious students will be given scooty. Then initiating the state talent research scheme, launching mission Atmanirbhar Mahila,
Prakalpas and promoting women SHGs. Then we focus on Unnato Tripura and Shrestha Yuva in the next few years. Self-employment opportunity to the interested youths, launching Tripura Sainik Abhiyan so that they can make entry in the armed forces or police recruitment, launching of the Tripura Agni Veer program, initiating Samarth Tripura Abhiyan in financial, digital literacy and soft skills, ensuring gymnasium and playground in every Gram Panchayat, establishing Tripura Skill University, then Skill Development Corporation for the youths. We also want to have Chief Minister's Fellowship Program to encourage the youths so that they can become professionals. Free coaching centers for the youths, then establishing the Sachindra Burman Performing Arts Academy so that we can popularize the folk dance, music, theatre and encouraging the activities associated with them. Then we have Nashamuk Abhijan, which is very important because the youths are nowadays indulging in various drug abuses. Campaign is going on. We want to launch the campaign with an investment of 150 crores in the state. Integrated Rehabilitation Center will be set up and task force will monitor the impact of the de-addiction measures. There is a suggestion for inclusion of some indigenous games and indigenous dances like Hojagiri, Shangrai, Mamita, which are very popular in the state. So the youth are engaged in this, even at the national level, youth festival. Thank you, sir. Thank you so much, representative from Tripura. Now we have, the house is open for discussion, and we are only 5 minutes late than our schedule. So we are keeping 15 minutes for this, with the permission of chair, sir. Sir, there is a request, two things. One is if you could include the subject of idea of India 2047. So you spread the idea down to the last level. And the second thing is you are suggesting the competitive stuff should start from district. No, but you please start it from block level, yeah, because it will give a lot of spread to the subjects which you have identified. And if it goes to the block level, it will not be much difference, except that if we, like UP has to do it, we have to do it at 885 places. We will do it, but the whole subject, the idea would go down to the block level, and that is the more mass involvement of the youth. And the third suggestion is that please don't limit the number of participants. Last time said 100 से ज़्यादा नहीं आएगा. अब 40-50 तो उसी में हो जाता है कल्चर प्रोग्राम में, बाकियों को कैसे भेजेगा? तो 2-4 आगे पीछे ऑप्शन होना चाहिए. थैंक यू. नमस्कार. नमस्कार, मैं अरूप विश्वास, मैं मिनिस्टर हूँ बंगाल गवर्नमेंट से. आई एम लुकिंग आफ्टर द यूथ एंड स्पोर्ट्स एज वेल एज द पावर एंड हाउसिंग. Respected Anurag ji, Nishtish ji. Actually, we are discussing about the National Youth Festival. मैं चाहता हूँ the National Youth Festival emphasize on the cultural side. There is the other side we are discussing about the sports and games. It should be concentrated on the cultural side. 15 to 20 events it will be there. हमारा बंगाल में हम लोग ब्लॉक लेवल से हमारा स्टूडेंट यूथ फेस्टिवल होता है. नीतीश जी को पता होगा. ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट. तो 15-20 इवेंट होने से हम लोग वैसे ही रेडी करके जाएंगे हर स्टेट से. तब एक कंपटीशन होगा जिसमें हम लोग, इट शुड बी एक टैलेंट सर्चिंग प्रोग्राम जहाँ से हम लोग फ्यूचर्स को ढूंढेंगे. ये अच्छा होगा. नहीं इतना कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड इतना सब्जेक्ट हो जा रहा है, मेरे ख्याल ये ऑर्गेनाइज करने में 2 महीना में हो नहीं सकता है इतना बड़ा स्टेट में. तो बहुत सारे सब्जेक्ट, इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन 15 to 20 events. Then it should be हमारे पूरा कंफर्टेबल होगा स्टेट में करने के लिए, क्योंकि इतना ब्लॉक करके, डिस्ट्रिक्ट करके, स्टेट करके
फिर आपके वहाँ जाने के लिए हमको तैयारी करने में बहुत टाइम लगता है, 2 महीना इनफ नहीं है, तो इसमें रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। Good afternoon, everyone. नेशनल यूथ फेस्टिवल में ज़्यादातर देखते हैं कि कल्चरल सेक्टर का ज़्यादा ये होता है, थोड़ा सा उसमें गाइड करना चाहती हूँ, हो सकता है मैं भी सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसमें इंक्लूड करना चाहूँगी ओलंपिक नॉलेज कंपटीशन। ओलंपिक नॉलेज कंपटीशन चूँकि यूथ पार्टिसिपेट करते हैं, जब ओलंपिक्स गेम होती है तो हम यूथ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो इसलिए। दूसरा चीज़ है कि स्पोर्ट्स कंपटीशन यूज़ कर सकते हैं, बट हम उसमें 5 इंडिजिनस स्पोर्ट्स गेम्स को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि अदर कंट्री जो होते हैं इसी तरह गेम अपना लोकल गेम को यूज़ करते हैं और उसी में से इन्वेंट करते हैं। तो हम भी, हमारे लिए भी एक स्टेज बनेगा इस तरह का 5 इंडिजिनस गेम को अगर हम लोग इसमें लाएंगे, जो लोकल इवेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भी होता है, फर्स्ट टाइम 5 इवेंट ला सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स होगा। तीसरा इंक्लूड कर सकते हैं डिस्कशन ऑन ओलंपिक वैल्यूज़। ओलंपिक वैल्यूज़ मीन्स रेस्पेक्ट, फ्रेंडशिप एंड एक्सीलेंट, जिसका यूथ जो परफॉर्मेंस की बात करते हैं वहाँ आती है, जिसमें कि हो सकता है जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी इन स्पोर्ट्स, डोपिंग, मैनिपुलेशन और ब्राइवरी और करप्शन, like that, good governance in sports, media in sports, like that. So ये मेरा just suggestion है. Thank you. Sir, I am Ravindran Shankaran, DG Sports Authority Bihar. My simple suggestion is, these days youth are very much active with respect to crossword puzzles. So crossword puzzle should be included. And number 2 is, they are more now into e-sport. So if these 2 can be included, that will be great, sir. Thank you. And if Bihar has given these 2 to be conducted, we will definitely do it. Thank you. Sir, I think we have to focus more on the training programs and the seminar. This is one. And if we want to increase the magnitude, then we have to involve the foreign exchange program. These are my 2 suggestions, sir. So my suggestion is more in terms of the institutionalization of the youth festival and how we can take gains from it. So like everything has an alumni network, you know, most institutions have an alumni network. If we can think of an alumni of the previous youth festival participants, their awardees, and the cross-learning between them, that is a bond which remains for a long time. So if we can think of some way of institutionalizing this. Second, so the entire organization of these youth festivals, for obvious reasons, it gets very concentrated by the government. It's run by the government, and you have a couple of youth volunteers who have been working with you for a long time. आप उनको trust करते हैं, उनसे कराते हैं. Sir, in almost all good institutions, like if you have the IITs and you have the universities, these kind of festivals are conceptualized, designed, done by the youth themselves. So if we can, like the previous youth participants, the youth festival participants, if we can involve them in the organization also of the youth festival, and they come from various states. So this entire concept of a nation as a whole, and the organization of the festival, that itself is a very good experience in terms of both learning, in terms of capacity building, in terms of leadership development, and those bonds will remain forever. So that doesn't remain a one-off exercise, it becomes something which keeps continuing and which keeps getting added over a period of time. That is my... So Deepti, that is an excellent suggestion, and what the format we have suggested is that while the theme will be allocated today by draw of lots, how you want to conceptualize it, what activities you choose is your baby. You want to involve some student organization to conceptualize and execute it, your baby. All we have said is that you must hold competitions at district level at least to select competitors. If Sehgal wishes to hold at block level, that is the state's outlook. हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि थीम्स यहाँ से डिसाइड होके आज ड्रॉ ऑफ लॉट्स में एलोकेट होगी, उसका आपको कंसेप्ट क्या करना है आप देखिए। मैम मेरा कहना कुछ थोड़ा सा इससे भिन्न था, ये तो हम लोग जो करेंगे अपने स्टेट पे तो करेंगे। मेरा कहना था कि अगर हम इसको नेशनल यूथ फेस्टिवल का
label दे रहे हैं, so that the national part of it in terms of thing that can be better accentuated, better strengthened if we think of a mechanism like this. It's something which is open for suggestion and discussion. It's just a suggestion. And the second was very small thing is my feedback on the second aspect, which is regarding the life skill component. If that right now, the way it is structured in terms of the poster making and the storytelling and all that, if that can be slightly changed in terms of a little more of the contemplative and reflective experiences, which become very useful things which these children take back. Otherwise, again, it becomes a comparative exercise rather than, there's no life skill which you're actually developing through that particular module. You can't do it in 3 days or 4 days time. So if that, we can have some, there are people who work on this, and we have our own organizations who work on that. So if that can be just a little bit thought about, so that actually, you go back with some particular Thank you, sir. Good afternoon. This is Mulle Mihilan from Karnataka, sir. Sir, our suggestion is that the National Youth Festival can become a all throughout the year program, probably enabled by the portal, which can have all these events and competitions right from the block level to the top can be captured through those portals, and also discussion forums can be enabled in that portal where continuously there is discussion and everything. And we had this youth summit and Suvichar where experts or achievers from specific fields were brought to interact with youth who are participating in the NYF. If youth can select their area of interest, people who are already working in a particular area of interest and who have participated in things like that, if they are brought in, then probably they can take back a new inspiration and they can have specific interaction with those achievers in the field. And particularly for areas like Digital India and startups and entrepreneurship and all that, problem statements from public sector can be thrown out to the youth right at the beginning itself, and students and startups, they can actually find solutions and they can come there, and even you can bring in, make it as a platform where venture capitalists, startups, achievers can come and they also interact with them. The third and last point is, sir, particularly for areas like adventure sports, yoga and indigenous games, we can go from a demo mode to a workshop mode, and the outcome could be a certificate. So it's possible, sir, for an adventure sport or this thing. So I go to a National Youth Festival with a specific purpose, and I actually come back with a skill which I learn in that particular 3 to 5 days. Thank you, sir. Sir, my suggestion is regarding organization, not about restructuring, sir. Sir, I'm Raju Basnet, Secretary Sports from Sikkim, sir. सर ये रिसेंटली कंक्लूडेड जो कर्नाटका में यूथ फेस्टिवल हुआ सर, वहाँ से एब्रप्टली TADA देना बंद कर दिया सर स्टेट्स कंटिजेंट को. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है सर, वेन्यू लास्ट मिनट तक फिक्स नहीं होता है सर. सो फॉर अस हु कम्यूट फ्रॉम स्टेट्स लाइक सिक्किम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेंड अ कंटिजेंट. वहाँ लास्ट टाइम ऑल्सो वी हैड टू बुक एंटायर बोगी एंड देन गेट इट अटैच टू सम ट्रेन विच वॉज सो डिफिकल्ट टू गेट दैट वी ऑलमोस्ट हैड टू knock every door at the center and the ministry everywhere. So I request if the venue can be fixed at least 3 or 4 months in advance, and then the TADA could be given to the state contingents. Thank you, sir. Right. I am from Chhattisgarh. Sir, I would like to suggest, if possible, we can include different segment of bhajan gayak for youth, bhajan gayaki, and then ghazal gayaki, and then I would second, e-sports is a massive sport now. Youth are playing, and globally it is played. It is into Asian Games also introduced, and we have won medals also. So you know much about sports. These three are our suggestions, sir. Sir, we have been defining youth on the basis of age. So what I was thinking is, sir, Farooq Alam, Assam, sir. सबके आगे उनकी स्टेट का एक प्लेकार्ड रख दीजिए ताकि सिर्फ उठा के बता दें तो मुझे स्टेट का नाम पता चलता है कि मैं स्टेट का नाम दूँ.
So I was just thinking few minutes back, so why not define youth? We can give a tag word or a tag sentence to each of the letters of the word youth. For example, Y can be young mind, O can be open to ideas, U can be united, we stand, T is thoughtful, H is hardworking, something like that. That definition from the ministry, if it comes, that will be good, sir. And the second thing regarding the life skill thing, story writing, and also we can have a compilation after the event is over, so that they get the writers, they get one recognition also. So photographs also, we can have one album also, we can send it to their schools or colleges or universities and to the concerning participant also, sir. Thank you, sir. Namaskar, sir. I'm Vikramaditya Singh from Himachal Pradesh, Minister for Youth Services and Sports. Honorable Anurag ji and all esteemed members present here. It is an honor for me to be present here and representing my state. आज जो ये National Youth Festival पे जो annual event है, a lot of things have been spoken in terms of culture, lifestyle and thematic and Yuva Kirti, but something that I think needs to be dwelt upon is the climatic changes and the global warming that is happening, and we are a signatory to the Green Initiative as a state also and a nation also. Something in that regard should also be harped upon, which I believe will help the coming generations to make them more aware about the climatic changes that are happening in the state. So whatever different things in terms of what I was seeing in Maharashtra, short films and documentaries being done, and in natural heritage walks and different things are being done, and also the production of different seeds and millets and jowar in different areas. But what I want to harp upon, जिस पे मैं अपना emphasis देना चाहता हूँ कि it should be done in consonance with global warming. That is something that needs to be harped upon, and maybe that also can be brought in at some sphere. Thank you. Sir, as a precursor to the youth festival, and can we think of creating youth icons which can be recognized at that platform through kind of some challenges which can be precursor to the event, starting right away, like some kind of fitness challenge, some kind of a community service challenge, that those kind of challenges which can be created right now, 8-10 challenges, and those 8-10 icons can be then felicitated at the final event, those who meet up those challenges or come first on those challenges, sir. Sir, secondly, sir had mentioned about the duties part rather than the rights part. So we have, for example, sir, we have so many apps on the gaming, speed breakers, and but we don't have any single app which is telling about the best scoring according to what is a good driving, what is a good law following. So can we have app, development of app on the experiential learning and following the law through experiential learning, how to drive on a street rather than doing the speed driving, whether you're meeting up the points with a good driver, with a good. So this is one example. There can be on the other side, the sustainability, on the green side, how do you do the sustainable living? So that experiential learning through the apps, but on the positive side, not on the negative side, like the speed driving or something. So this is the two suggestions, sir. नमस्कार सर, मैं सीताराम लांबा राजस्थान से हूँ। सर बहुत अच्छे सजेशन आए, और मैं स्पेशली मेंशन करना चाहता हूँ जो तमिलनाडु की पीपीटी है उसमें बहुत ही पावरफुल सजेशंस हैं, और स्पेशली जैसे कि शॉर्ट फिल्म मेकिंग और इनको भी जगह दी जाए, ताकि जो युवा इस समय जिस फील्ड में अपना करियर भी बनाना चाहते हैं वहाँ पर उनको जगह मिल पाए।
दूसरा सर मेरा एक सजेशन है कि जो हमारा यूथ फेस्टिवल्स में यूथ अवार्डीज़ जो हम लोग देते हैं यूथ अवार्ड्स, उनको उसके बाद कोई हम फैसिलिटी नहीं देते, तो जिस तरह से नेशनल में जो हमारे प्लेयर्स को हम लोग पैसा भी देते हैं, उनको आगे फैसिलिटेट भी करते हैं, उनको आगे बढ़ने के मौके देते हैं, वैसे ही हमें हमारे यूथ अवार्डीज़ को भी मौके देने चाहिए। और उसमें थोड़ा सर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कोऑर्डिनेशंस हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, तो प्रॉपर सर एक कोऑर्डिनेशन ज़रूर होना चाहिए। और एक जो यूथ हमारा नेशनल यूथ फेस्टिवल है उसमें हम चाहते हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि नीचे स्टेट में ज़िले में कंपटीशन हो, स्टेट में कंपटीशन देन वो आए, बट स्टेट में इतने पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए फंड्स नहीं होते, तो हम ऊपर तो फंड्स लगाते हैं पर नीचे हम लोग फंड्स देते नहीं हैं। तो थोड़ा अगर स्टेट्स में इसके लिए हम देंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टेट भी काम कर पाएंगे और अच्छी प्रतिभाएं निकल कर अलग अलग क्षेत्रों से आगे आएंगी। थैंक यू सर। तो दैट सर, म्यूज़िक को लेके मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ना सिर्फ गज़ल या भजन सिंगिंग, बट इवन द मोर मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक विच एंगेज द यूथ अ लॉट मोर, इंक्लूडिंग मतलब maybe more Western forms of music, they should also be included in the festival, because I definitely think that will increase the interest and participation. Similarly, sir, the other current obsession of our youth is social media. तो social media पे आधारित अगर कुछ competitions youth festival में रखे जाएं या कुछ events रखे जाएं, like a TikTok competition or something like that, perhaps that would also increase the interest level and participation in the youth festivals. Good afternoon, sir. This is Wasim Raja, Additional Secretary, Youth Service and Sport, J&K. I have a couple of suggestions, sir. The first one is that we must have a tagline and then go for a strong pre-event publicity of the youth festival so that it creates a level of inquisitiveness among the youth beforehand. Then we must also look at the takeaways of the event, sir. I believe that the youth in the tribal areas, they need special sessions of capacity building in these festivals so that they are able to earn their livelihood. For example, if somebody wants to establish, set up a small adventure hire equipment shop, he must know what to do about that and what are the government schemes that help, that would help him in that. So similarly, there are so many youth who are innovators and who have developed and who have invented a lot of gadgets. They need to be provided a platform in these youth festivals, sir. Thank you. Thank you, sir. Now they will be drawing of lots for the assignment of themes for organizing events to different states and union territories for the 27th Youth Festival to be organized in January 2024. I request the team from Department of Youth Affairs to undertake the exercise immediately. ये यूथ फेस्टिवल को लेके ड्रॉ ऑफ लॉट्स है। Yes, sir. Lots. Theme थीम allocation. देने वाले, थोड़ा स्पीड पकड़ो भाई, एक ही है बस। Meanwhile, I will like to announce that we have set up a BMI center near the registration counter. All the delegates who are interested can get their BMI done and even download the Fit India app.
Now we break for lunch. I request all the delegates to join for the lunch on the ground floor in the convention center. Honorable ministers and the delegates joining them on the dining table for discussion may please proceed upstairs. We shall meet after 45 minutes at 2:45 p.m. Thank you. Office of the Imphal Municipal Corporation. Order. Order asigi matungina Imphal Municipal Corporation manungda leiriba ima kaithel sing haibadi Khwairambal ima kaithel Mari, Lamnong kaithel, Kongba kaithel, Singjamai kaithel, Pisum kaithel, Kaisamtung kaithel, Kwa kaithel, Tera kaithel, Lampen Supermarket kaithel, New Lampen Supermarket kaithel, hairiba kaithel sing asigi Association Loop Amadi Kaithel Pamiribi Imai Bilasing Mafamda, Gariguma Karadan Kanganjari, Madudi, Imphal Municipal Corporation Gi Ayaba Yauduna, Kaithel Manunda, Kaithel Lairembigi Sanglen, Sajanba Amadi, Dharmaga Mailinaba, Makalamatagaba, Tabak Thorom Singh, Pangtok Paya.